everyone. I hope आप लोग अच्छे हो and you people are taking care of yourself, practicing problems, learning concepts, and preparing for your exams. With this video, we are going to start with revision series for NEET students. And the first chapter that I have selected is Kinematics. And as per your request, I have not simply taken all the PYQs relevant from every year. Also, I have included questions from DC Pandey NEET and from HC Verma. Okay, so my aim is to club here all sort of questions that can help you revise through all sort of concepts that can be used in kinematics. Okay, so ये काफी ज्यादा एक holistic video होने वाला है. I mean that is going to help you revise through all the concepts of kinematics. So we will be starting with first question, but उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, जैसे don't watch this video like you're watching some film. अगर आप काइनेमेटिक्स टॉपिक से टच में हो देन यू शुड बी पॉजिंग विथ ईच क्वेश्चन. यू शुड बी गिविंग योरसेल्फ सम 30 seconds to think around what concept you will be using or formula you will be using in order to get to the answer. Okay, और अगर आप काइनेमेटिक्स से बहुत लंबे समय से टच में नहीं हो देन यू कैन वॉच it in one go. Okay, and then you can utilize whatever you have learned out of this video in your upcoming mock test. डन है. सो वहां पे आप यूज कर सकते हो एंड देन यू विल फील लाइक कि ओके कैसे एप्लीकेशन हो पा रहा है. डन है, क्योंकि एप्लीकेशन करना बहुत जरूरी होता है. वीडियो देखना इज नॉट इनफ. वट एवर यू हैव लर्न यू नीड टू अप्लाई. एंड अभी जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं इन अपकमिंग मे मंथ उनके लिए मॉक टेस्ट तो चल ही रहा होगा. अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक आई वुड से यू आर कमिटिंग, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना यू कैन नॉट इम्प्रूव अपॉन थिंग्स. Done it. So whatever you will be learning here in this video, you will have to apply in upcoming practice sessions, be it mock test or something different. Okay. So आप जरूर करना. चलो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? विथ व्हाट स्पीड सो द बॉडी बी थ्रोन अपवर्ड सो दैट डिस्टेंस traversed in 5th second and 6th second are equal. So you are throwing body upward means you are throwing under the influence of gravity. So gravity के अंदर का मोशन है ये. And we are getting said that 5th second में और 6th second में distance covered are equal. So can we use this distance covered in nth second formula which states that it is equal to u plus a by 2 2n minus 1. So ये formula हम कब use करते हैं? When a is a constant, that is constant acceleration, right? And also one more important thing, that in that nth second body is not reversing its direction, that is it keeps on moving in that single direction. Okay, लेकिन यहाँ पे देखो हमें ये नहीं पता कि ये बॉडी कितने टाइम में ऊपर कितने टाइम को पहुंचेगी एंड देन एट व्हाट टाइम इट विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड. It may happen in the interval of 5th second. It may happen in the interval of 6th second. Nothing is clear. So we cannot use this formula. Done it? So आप use नहीं करोगे. Now how to solve this question? तो देखो इसको मैं ग्राफिकली बहुत इजीली सॉल्व कर सकती हूँ. जैसे आप यहाँ पे ये ग्राफ बना लो. I mean, let us draw the VT curve. Why I'm interested in drawing VT curve? Because area under VT curves gives us what? Change in displacement. Okay. So आप ध्यान से बनाओ ये कैसा होगा. I mean, motion under gravity के लिए dv by dt क्या है तुम्हारा? Constant होता है. That is g, right? So that is constant. And initially, let's say you have thrown it with certain speed u. So at t equal to 0, its speed is u. So somewhere here will be the graph point. Okay. So t is 0 and velocity is u. And as it will go up, its velocity will what? Decrease. So as the time will increase, velocity will decrease. Done है. And at certain time, its velocity will become 0. That is the highest point. And then it will start coming down. Done है. And then while it will come down, its velocity will again increase. So ये increase हुआ और देखो वापस से यहाँ आएगा. डन है. सो आपको ये भी पता होगा कि जितना टाइम उसको लगेगा ऊपर जाने के लिए उतना ही टाइम लगेगा उसे ऊपर से नीचे की तरफ आने के लिए. ये तो आपको पता होगा. अगर आप कंफ्यूज भी हो यू कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस वन. सो ये तो सेम ही होता है. डन है. अब देखो ये ग्राफ मैंने क्यों बनाया, अगर आप ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे, अगर मैं 0 से 1 सेकेंड तक की बात करूं एंड देन लेट्स से दिस इज 2t नॉट टाइम एंड देन 2t नॉट माइनस 1 is this time. So ये भी जो लास्ट 1 सेकेंड है उसमें भी डिस्टेंस कवर्ड क्या होने वाला है? सेम. क्योंकि देखो ये एरिया सेम होने वाला है. डन है. और जैसे जैसे आप राइट की तरफ ग्राफ में बढ़ते जाओगे, सिमिलरली ग्राफ के सेकेंड पोर्शन में जब बॉल इज कमिंग फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, अगेन ये वाला जो पोर्शन होगा लास्ट 1 सेकेंड से पहले वाला 1 सेकेंड, सो ये है फर्स्ट 1 सेकेंड से लेटर ऑन वाला 1 सेकेंड. सो उसमें जो भी डिस्टेंस कवर्ड है इज सेम
is this in this. Okay. सो अगर हमारे क्वेश्चन में ये कहा है कि फिफ्थ और सिक्स सेकेंड आर इक्वल, डिस्टेंस कवर्ड इन फिफ्थ एंड सिक्स आर इक्वल, इसका क्या मीनिंग है? सबसे पहले तो देखो फिफ्थ एंड सिक्स आर कंसेक्यूटिव टाइम, देन है। सो ये तो ऐसा नहीं हो सकता ये एक सेक, जैसे देखो अगर सपोज कर लो पूरा टाइम लगता है 8 सेकेंड, तो ये है तुम्हारा 0 से 1 और ये होगा 7 से 8। सो ये कंसेक्यूटिव नहीं है। अगर कंसेक्यूटिव हो रहा है टाइमिंग, इसका मतलब कि इस पॉइंट के अराउंड वाले टाइम है। So maybe this is your fourth से fifth second, and then this is fifth to sorry, fifth second है ना। So fourth से fifth, and then fifth second कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? I mean sorry, this is fifth second and sixth second. So fifth second कहने का मतलब क्या? You are starting from t equal to, I mean 4 has been completed and then you are covering for the 5, you are going for the fifth second, then समझ रहे हो ना? ठीक है, I don't want you to confuse. So समझ रहे हो ना? इसका मतलब इस पॉइंट के अराउंड वो टाइमिंग सिमेट्रिकल होगा, देन सो वी विल सी दैट फ्रॉम t equal to, in t equal to 5 second it will go up and then it will start coming down. So 5 से 6 second, 4 से 5th second में जितना वो डिस्टेंस कवर किया है उतना ही 5th से 6 में किया है। So distance covered in 5th and 6th seconds are what? Equal. यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन ये पता चला that time of flight, I mean time of flight is equal to 10 second. So bottom से top पर जाने का टाइमिंग क्या है तुम्हारा? 5 second. Done है? And if you know that, you can calculate easily with what speed you were throwing it. So कितने स्पीड से आपने फेंका? V equal to क्या लिखोगे? U plus 80. So at top point V is 0, and whenever you are using equation of motion, and if motion can happen in two direction, हमेशा आप डायरेक्शन को प्लस माइनस साइन देना, यानी कि साइन कन्वेंशन आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे तुम्हारा बॉडी क्या है, जैसे मोशन कैन हैपन इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऑल्सो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लो, सपोज कर लो मैंने टॉप को पॉजिटिव लिया और बॉटम डायरेक्शन को मैंने क्या ले लिया? नेगेटिव लिया। ठीक है। सो व्हेन आई एम यूजिंग v इज इक्वल टू u plus 80, v is 0, u is in upward direction, so u, and acceleration due to gravity is downward, which I have taken as negative, so this is minus gt, done है। So u is equal to gt, so u is equal to how much? G is 10, t is what? 5 second, so this is equal to 50 meter per second, that will be your answer। ठीक है। So 50 meter per second, यानी कि ये डन है। यहाँ पे g का वैल्यू 9.8 लिया गया होगा, आई हैव टेकन 10, सो वी आर गेटिंग दिस। सो ग्राफ से आप सिंपली समझ सकते हो कि अगर फिफ्थ एंड सिक्स में इक्वल हो रहा है, इसका मतलब कि ये वाला जो टाइमिंग है इस पॉइंट के अराउंड वाला टाइमिंग है जब वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। डन। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू डिस्कवर। आंसर शुड बी बी। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ यू बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स असेंट। अब देखो सेम कॉन्सेप्ट से ये भी क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि u स्पीड से आपने फेंका, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स असेंट। सो असेंट का मतलब क्या है? जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है। सो लास्ट t सेकेंड में वो कितना ऊपर चढ़ा है? सो लेट्स से उसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, कुछ भी टाइम लगा, लेट्स नॉट गेट बॉदर्ड बाय दैट वन, बट इसके मोशन का, अपवर्ड मोशन का जो लास्ट t सेकेंड है, लेट्स से उस लास्ट t सेकेंड में ये इतना चला है। देन while it is coming from top to bottom, in that first t second it will be covering the same distance, क्योंकि अभी अभी हमने ग्राफ में देखा अगर ये लास्ट t सेकेंड का डिस्टेंस है, then while it is coming down, then in first t second it will be covering the same distance। ओके। सो आइदर आप इसके अपवर्ड मोशन से ये डिस्टेंस निकाल लो या डाउनवर्ड से, विच एवर इज इजियर, यूज दैट थिंग। जैसे इनिशियल स्पीड तुम्हें क्या दिया हुआ है? u, बट यू डोंट नो व्हाट इज स्पीड हियर, and you don't know also how much time it has taken in moving from ground to this point p, then वो भी नहीं पता। so but जब वो डिसेंड कर रहा है, आई मीन व्हेन इट इज कमिंग डाउन, उस आई मीन उस मोशन को आप इजिली यूटिलाइज कर सकते हो। सो उस मोशन के लिए हमें पता है दैट इट एट दिस पॉइंट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट? 0, बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, एंड यहाँ से यहाँ आने में टी टाइम लगा है, दैट वी नो। सो वी कैन इजिली कैलकुलेट डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगेन यू नीड टू यूज द साइन कन्वेंशन। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर आप यहाँ, चलो मैं पॉजिटिव लेती हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन को, so displacement is in downward direction, acceleration due to gravity is in downward sense, so half g
This is g into t का square. So answer should be what? Half gt square. So option D. समझ रहे हो ना? सो मोशन अंडर ग्रेविटी को आप थोड़ा सा एनालाइज करना, तभी फॉर्मूलाज यूज करना. दैट विल मेक योर थिंग्स मोर इजियर. ओके. Now let us move to this one. A person throws ball into air after every second. The next ball is thrown when the velocity of first ball is 0. So हर सेकंड में बॉल को फेंका जा रहा है. So at t equal to 0, first ball is thrown. At t equal to 1 second, next ball is thrown. Done it. And it is said that the next ball is thrown when the velocity of first ball is 0. So first ball का velocity 0 हो चुका है जब तुम नेक्स्ट बॉल को थ्रो कर रहे हो, और नेक्स्ट बॉल को आप कितने टाइम के बाद थ्रो कर रहे हो? 1 सेकेंड. इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जो आपने फर्स्ट बॉल को फेंका है उसको हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है? 1 सेकेंड. दिस इज डैम क्लियर, राइट? सो ये क्लियर है. हाउ हाई डज द बॉल राइज अबव हिज हैंड? सो मैक्सिमम हाइट तक जाने में 1 सेकेंड लगता है, तो आप डिस्टेंस निकाल लो. ओके. सो एस इज इक्वल टू व्हाट यू कैन राइट, आई मीन टाइम यू नो, and u is not known, right? Yeah, so we cannot use this thing. Let us use this thing. What we can use? हमें क्या height निकालनी है, right? Okay, how high does the ball rise? So can we use v square is equal to u square? But u we don't know, right? So we can calculate u here also. So चलो सबसे पहले u को निकाल लेते हैं क्योंकि और कोई रास्ता दिख नहीं रहा. So v is equal to क्या होता है? u plus at. चलो लेट अस यूज द साइन कन्वेंशन. अप डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रही हूँ और डाउन डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले रही हूँ. ठीक है. सो v इज इक्वल टू 0, u वी डोंट नो, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, सो माइनस g आई एम टेकिंग, एंड टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड इन रीचिंग टू द टॉप पॉइंट. ओके, क्योंकि हमने टॉप और बॉटम के लिए ये इक्वेशन यूज किया, तभी तो v 0 लिख रहे हैं, राइट? सो u इज इक्वल टू हाउ मच? 10 मीटर पर सेकेंड. नाउ यू कैलकुलेट, I mean v square से भी निकाल लो. V square is equal to u square plus 2s. So this is 0 and this is 100 and this is minus 20 into s. So s is equal to how much? 5 meter. Okay. So this is what you are going to get. Okay. Now let us move ahead. A person sitting on the top of a tall building is dropping balls at regular interval of 1 second. So 1 second के interval पे you are throwing ball. Find the position, you are dropping ball. ठीक है. Find the position of third, fourth and fifth ball when the sixth ball is being dropped. सबसे पहले तो ड्रॉपिंग द बॉल कहने का मतलब द पर्सन इज नॉट गिविंग इट एनी इनिशियल वेलोसिटी व्हाइल लेटिंग इट गो फ्रॉम दैट हाइट. ओके. सो इनिशियल स्पीड आपको 0 लेना है. जब भी कोई कहता है कि बॉल इज लेट गो, इट इज ड्रॉप्ड, इट इज अलाउड टू फॉल, तो सिंपल है, यू आर नॉट गिविंग इट एनी इनिशियल वेलोसिटी. ओके. And then the person is throwing ball at regular interval of 1 second. तो चलो एक काम करते हैं. सपोज कर लो सबसे पहले t equal to 0 पे first ball is getting dropped. Then my question is how much distance it will cover in the t time. Let us talk about t time. So distance covered by first ball thrown in t time will be equal to, since you are dropping, u is 0, so ut plus half at square. Let us treat downward direction as positive. So half into g into t का square. This will be this one. अब चलो एक काम करते हैं. t equal to 1 second पे we are throwing what? Second ball. So ये है तुम्हारा first ball का status. Second ball जब t equal to 1 second पे आपने throw किया, how much distance it has covered in t time? So second ball कितने time तक चला है? t minus 1 तक, क्योंकि 1 second पे तो you have thrown it. So for 1 second it was not moving. It was still in the hand of person. So at 1 second it is thrown and t time has elapsed starting from t equal to 0. It means in t time how much distance it is going to cover? You will be taking the time for which it will be in the air, and that timing will be t minus 1, right? Because for 1 second it was in the hand of person. So this is second ball. Similarly third ball को आप कितने टाइम में थ्रो कर रहा है person? I mean drop कर रहा है 2 second. Okay, so 2 second तक तो वो person के hand में था. So distance covered in t time will be half g t minus 2 का whole square. This is third ball का status. Similarly आप fourth ball के लिए लिख लो half g t minus 3 का square. This is fourth ball. And then what will be fifth thing? Half g t minus 4 का square, fifth ball. And sixth ball will get thrown at time t equal to 5 seconds. So half g t minus 5 का square. This is the status of sixth ball in t second. Okay.
We are getting asked find the position of third, fourth and fifth ball when the sixth ball is being dropped. तो जब आप सिक्स बॉल को ड्रॉप कर रहे हो यानी कि कौन से टाइम की बात हो रही है t इक्वल टू 5 सेकेंड. सो t इक्वल टू 5 सेकेंड में find the position of third, fourth and fifth. So this and this. सो थर्ड बॉल कितना चलेगा t इक्वल टू 5 सेकेंड में. सो t का वैल्यू ऑफ 5 रख लो. 5 minus 2 is 3. 3 का स्क्वायर इज 9 एंड दिस इज 9 into 5, right? So that is 45 meter. And how much this one will be covering? 5 minus 3, 2. 2 ka square 4 and then 2 and this become how much? 20. Am I right? This is your 5 minus 3, 2, 4 and 40 by 2. Yeah, that is 20, right? And then if you check with this one, this is going to be 5 minus 4. Okay, so 5 minus 4 तुम्हारा कितना होने वाला है? This is 1 and this is going to be 5. So when you will take the ratio 5 is to 20 is to 45. डन है. अगर आपको थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सो 45, 20 एंड 5 ऐसे रेशियो लेना होगा, राइट? Because find the position of third, fourth and fifth ball when the sixth ball is being dropped. रेशियो लेना ही नहीं है, हमें सिंपली पोजीशन बतानी है. सो दिस इज द पोजीशन. अगर आप रेशियो लेते हो तो तीनों का ही 45 is to 20 is to 5. 5 को कॉमन ले लो. सो दिस विल बिकम हाउ मच? दिस इज योर 9 is to I mean this is 4 and this is 1. Okay, so that also you can take. चलो आगे बढ़ते हैं. So this is this thing. Now let us talk about this one. A body thrown vertically up from the ground passes height of 10.2 meter twice in an interval of 10 seconds. What was its initial velocity? So question ये कह रहा है कि 10.2 मीटर के मार्क को वो कितने इंटरवल में कवर करता है? 10 सेकेंड. तो देखो जब आप बॉल को फेंकते हो इट इज गोइंग अप एंड अप एंड अप. 10.2 मीटर के मार्क को आप उसको मार्क कर लो. सो दिस इज 10.2 मीटर. लेट अस कॉल इट पॉइंट पी. सो इट इज कवरिंग पॉइंट पी इन इंटरवल ऑफ ट्वाइस इन एन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड. सो लेट से टी इक्वल टू 0 पे इट वाज एट पी. देन after 10 seconds it is again at peak. It means it took 5 seconds to reach to the maximum height and then another 5 seconds in again reaching to point P. Because दोनों टाइम इक्वल होगा, राइट? ये हमने ग्राफ से भी देखा था एंड ऑल्सो फ्रॉम कैलकुलेशन दिस थिंग इज गोइंग टू बी इक्वल. ओके, सो ये 5 सेकेंड हुआ, ये भी 5 सेकेंड हुआ. So what was its initial velocity? How we can go around calculating this initial velocity? So if we know what is velocity at this point, we can talk about velocity at this point later on, right? So सबसे पहले आप इस point की velocity निकाल लो. उसके लिए आप इस motion को use कर लो when it is coming from the highest point to the point P. Okay, so if I use your thing V is equal to U plus AT. Again, don't forget to apply the sign convention. चलो, since downward motion में I'm interested in this interval, I'm taking downward direction as positive. Okay, so V is equal to how much? U is 0 and this is your 10 into 5. So this is your 50 meter per second. Now let us use again equation of motion for 2 points, that is from point O to P. Okay, so I mean let us take O as the initial point, P as the final point for this interval while it is going up. Okay, so for this one, if you use V square is equal to U square plus 2S. So I've taken downward as positive. Let us stick with this one. Okay. So V ka square, since ये square is, sign convention won't matter. And this is U ka square. V ka square is how much? That is 50, right? So 50 ka square, U ka square we don't know. And downward direction we have taken as positive. So that is going to be plus 2 into 10. S will be what? Positive or negative? That will be negative. Be careful with this one. जैसे देखो, initial point y का value क्या है? 0 and final point y का value तुम्हारा क्या है? 10.2. So basically we are going in the upward direction and up direction is taken as negative because down we have taken as positive. So this will be minus 10.2. Okay, so you need to write carefully here. Now what will be U square? That is 2500 plus this is 10.2 into 10, 102 into 2, that is 204. So this will become how much? This is going to be 2. I mean here 204 you will be adding. So 2704 and this will be
एग्जैक्टली रूट ऑफ 52। वैसे भी अगर आपको एग्जैक्टली exactly आ नहीं रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यू कैन चेक फ्रॉम हियर। 26 तो हो नहीं सकता, 45 हो नहीं सकता, बिकॉज यू स्क्वायर इज 50 का स्क्वायर प्लस समथिंग, सो 50 से तो ज्यादा ही होगा, और 50 से बहुत ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज दिस whatever you are adding is 204, so it won't be clearly 61, it has to be 52. Okay, I hope it is clear. Chalo, now let us start with this one. A stone falls freely under gravity. The total distance, again, freely under gravity कहने का मतलब it started with velocity, initial velocity 0. The total distance covered by it in the last second of its journey equals the distance covered by it in the first 3 seconds of its motion. The time for which the stone is in air. अब देखो ये नीचे की तरफ गिर रहा है, सो मोशन इज हैपनिंग इन सिंगल डायरेक्शन, वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ nth सेकंड। ओके, सो लास्ट सेकंड में कितना कवर हुआ है, वॉट एवर इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट 3 सेकंड। सो सबसे पहले आप फर्स्ट 3 सेकंड में डिस्टेंस कवर निकाल लो, ठीक है। सो कितना होगा बताओ, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ओके, एंड दैट इज u जीरो, राइट। सो दिस इज डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रही हूँ, सिंगल डायरेक्शन का मोशन है, पॉजिटिव ही लेकर चलो। हाफ, क्योंकि नेगेटिव लेने का कोई मतलब ही नहीं है, इट विल गेट कट, राइट। सो हाफ इंटू 10 इंटू हाउ मच, 3 सेकेंड बोला है, ठीक है, सो 3 का स्क्वायर, एंड दिस विल बिकम हाउ मच, 45. Now in the last second of its motion, let's say for t time it is in air. So last second means in tth second we have to write the displacement. So that will be equal to how much? That is equal to u, which is 0, and a by 2, that is 10 by 2, 2t minus 1. And this is given as equal to 45. So from here you can easily calculate, right? So this is this is this. 2t is equal to 10 and t is equal to 5 seconds. So correct answer will be first one. करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते। A body is thrown vertically upward from the top A of a tower. It reaches the ground in t1 second. If it is thrown vertically downward from A with the same speed, तो चलो पहले A point को बनाते हैं। First you what did? You gave this ball velocity u in the upward direction. So first it will go up like this, then it will come down and strike the earth. Okay. In second case, from point A only, what you are doing, you are throwing it downward with speed u. Okay, and then it is striking ground in what time, t2, and here it took how much time, t1, in reaching from A to the earth. Okay, A to earth. Okay, and third ये कह रहा है कि if from A it is allowed to fall freely, so you are not giving it any initial velocity, it is simply getting dropped, then in what time it will reach to earth. So let us say in t time it is reaching. So you need to utilize these two cases in order to calculate t for the third case. Okay. So अगर मैं first case के लिए लिखूं, जैसे देखो तीनों ही केस में starting point is A, right? And final point is what? Earth. So सारे cases में initial and final is AO. Then respectively. Sorted. So let us use equation of motion for the first case. हर के लिए चलो मैं downward direction को positive लेती हूँ. So up will be automatically negative. Done है. First के लिए चलो use करते हैं. So displacement is equal to how much? ut plus half at square. So displacement क्या हो रहा है? देखो final position is 0 height के term में, इसको reference height हम लेकर चल रहे हैं अर्थ को. So and initial height is how much? That is h. So overall it is coming down. Done है. So displacement will be positive because downward direction we have taken as positive. ऐसे भी अगर आप करोगे इनिशियल माइनस आई मीन फाइनल माइनस इनिशियल, सो जीरो माइनस माइनस एच, माइनस एच में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखोगे एक्स जीरो एंड वाई माइनस एच, क्योंकि दिस इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, आपको हमने नेगेटिव लिया है। सो ओवरऑल आप ये देखो कि डिस्प्लेसमेंट डाउन हो रहा है या अप, डाउन हो रहा है, देन है क्लियर है। सो इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन डाउनवर्ड सेंस दैट यू हैव टू टेक पॉजिटिव। मैं इस पे ज्यादा स्ट्रेस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पता है क्या है, बच्चे आई मीन दे नो एवरीथिंग, स्टिल दे डू मिस्टेक्स बिकॉज दे डोंट यूज साइन कन्वेंशन प्रॉपरली, एंड आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स कमिटिंग मिस्टेक दिस वे, एंड दैट इज व्हाई आई एम पुटिंग more stress on this point. So h is equal to this, and u is in upward sense, so minus ut, and g is in downward sense, so half g t1 ka square. So this is t1, right? And for second case, if you will be using h is equal to u
that is your T2. You have taken positive because it is given initial velocity in the downward sense, plus half g T2 का square. And third के लिए अगर आप लिखते हो, then you will be writing h is equal to half gt square because it is not given any initial velocity. ठीक है, अब आप क्या करो, I mean you need to do something mathematics. डन है. सो इस इक्वेशन को देखो, हमें क्या करना है, हमें h को एलिमिनेट करना है, u को एलिमिनेट करना है, राइट. सो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखो, वी कैन डू समथिंग, वी कैन एलिमिनेट u वेरी इजीली. इसको आप t2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको t1 से कर लो, एंड देन सिंपली ऐड दिस टू. सो h into t1 plus t2 will be equal to this two will get cancelled, and then here you are left with half g t1 T2 common ले लो आप, then you will be left with T1 plus T2. Okay, so this will get cancelled and H is equal to this. H का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, हाफ जी टी स्क्वायर. सो H एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं थी, H तो हमें ऑलरेडी पता है टाइम के टर्म में. दिस T जिसको हमें निकालना है, सो हाफ जी टी स्क्वायर is equal to half g t1 t2. Okay, so this thing will get cancelled and t is equal to how much, that is root under t1 t2. Okay, sorted. So correct answer should be which one, it should be your C. चलो आगे बढ़ते. A body is projected with a velocity u. It passes through a certain point above the ground after t1 second. Okay. Okay. Okay, I got distracted. Let me read the question once more. A body is projected with a velocity u. So हमने इसे u velocity से project किया. It passes through a certain point above the ground after t1 second. So let's say it is passing through this point after t1 second. So t equal to 0 पे आपने throw किया and t1 second के बाद it is passing through point P. Okay. The time interval after which the body passes through the same point during the return journey is. So you have to talk about time interval जिसमें कि बॉडी फिर से P पॉइंट तक आएगा. डन है. सो बेसिकली यू नीड टू कैलकुलेट टाइम दैट इट विल टेक in moving from P to the maximum height and then from maximum height to P. So these two times are going to be same, right? So let us say this is T naught. So this also will be T naught. So basically we have to calculate 2 T naught. How we can go around this one? सो आप ध्यान से देखो, आप जरूर 30 सेकंड लेना सोचने के लिए, आप 30 सेकंड में इसको कर लोगे. ठीक है. सो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि इस बॉल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में क्या टाइम लगेगा, क्योंकि u इज गिवन, राइट. सो दैट वी कैन कैलकुलेट. लेट्स से दैट it is taking t time, then in moving from P to maximum height it will be t minus t1. Sorted. So that you calculate, and for that you will be taking 2 points. I mean this bottom point and this top point. So let us call it initial. This is final, right? So let us use equation of motion. V is equal to u plus at. V is 0. Let us take upward direction as positive. So this is u minus gt. So t is equal to how much? U by g. Okay. And so what is this T naught? T naught is equal to u by g minus t1. So 2 T naught will be the answer. So option is your B. Okay. So yeah. चलो आगे बढ़ते हैं. हेलीकॉप्टर मूविंग वर्टिकली अपवर्ड. हमारे पास एक हेलीकॉप्टर है विच इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड. थोड़ा स्ट्रेंज सिचुएशन है ना, क्योंकि हेलीकॉप्टर को हम ऐसे फ्लाई करते हुए देखते हैं एंड दिस इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड. बट जैसा दिया है वैसा ही करना है. एंड इट रिलीजेज ए पैकेट व्हेन इट इज एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड. एंड सपोज कर लो ये h हाइट पर है एंड देन इट इज रिलीजिंग पैकेट्स, फूड पैकेट्स, व्हाटएवर इट इज. The packet initially moves upward for a time t1 and then falls downward for time t2 until it reaches the ground. So let me unpack for you why first this packet will go upward. डन है. इस कॉन्सेप्ट को बहुत बार हम मिस कर जाते हैं जिससे कि हमारे क्वेश्चंस समझ में नहीं आते. तो देखो, जब भी किसी भी बॉडी को आप किसी मूविंग बॉडी से रिलीज करते हो, डन है, then that body getting released will carry with itself the velocity of moving body at that point. ठीक है. जैसे आपने सपोज कर लो यहाँ पे प्लेन की वेलोसिटी v है in the upward direction. Then if you are, even if you are dropping things out of aeroplane, that is you're not giving it any velocity, but since it is coming out of a body which is having v velocity upward, that thing getting dropped will carry initial velocity of the plane. I mean velocity of plane at that moment. So जो food packet आपने release किया उसका initial velocity will become v, and that is why it will first go up, then and it is going up for a time t1 and then it is coming down in time t2. So definitely t2 will be greater,
है ना, क्योंकि उससे ज्यादा हाइट नीचे की तरफ जाना है। ऐसे भी, और अगर आप कैलकुलेशन जैसे यूज करने के लिए फील करते हो कि नहीं चेक कर लेना चाहिए, तो चेक करने की देखो जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ध्यान से सोचो, इसको यहाँ से जितना टाइम लगा ऊपर की तरफ जाने में, सेम टाइम दिस पैकेट विल बी टेकिंग इन मूविंग फ्रॉम दिस हाईएस्ट पॉइंट टू दिस पॉइंट। सो यहाँ से यहाँ तक आने में T1 टाइम लगा है। सो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कुछ और तो टाइम लगा ही होगा। सो क्लियरली T2 इज ग्रेटर देन T1. So T1 is less than T2, right? So option A will be correct. चलो, अब जो भी कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। A ball is dropped from a balloon. So there is a balloon and this is going up at a speed of 7 meter per second. एंड इसके अंदर से आपने एक चीज को ड्रॉप किया है। ड्रॉप करने का मतलब यू आर नॉट गिविंग इन एनी वेलोसिटी, लेकिन सिंस ये ऐसे मूविंग, एक मूविंग बॉडी से ड्रॉप हुआ है, दैट object getting dropped will carry the velocity of moving body that is equal to 7 meter per second. Okay, so balloon कितने height पर है? It is at a height of 60 meter at the time of dropping the ball. How long will the ball take in reaching the ground? So कितना टाइम लगेगा इस बलून को कहाँ तक पहुंचने में? ग्राउंड तक पहुंचने में। तो आप सोचो, नॉट बलून को नहीं, बॉल को, ठीक है। सो बॉल को जब आपने इतने हाइट से ड्रॉप किया, देन इट इज हैविंग वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, and first it will go up to certain maximum height and then it will start coming down. Okay, so इसके मोशन के लिए आपको टाइम कहाँ से कहाँ तक का निकालना है? When it will start moving and when it will touch the earth. Okay, so let us say this is initial point because from here it is starting and here it is ending. Okay, so this is your final point. Okay, let us treat upward direction as positive. चलो आपको ही पॉजिटिव ले लेती हूँ, या फिर चलो डाउन को मैं पॉजिटिव लूंगी क्योंकि ज्यादा थिंग्स आर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो इसको मैंने पॉजिटिव लिया। नाउ लेट अस यूज दिस, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब आप मन में सोचते जाओ एस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। दिस net displacement is in downward sense, right? Because it is at certain height, finally it is hitting the ground, so displacement downward. And so I will write as 60, and up, u is in up sense, done hai, so that is minus 70, and g is positive, so 5t ka square. So this will become how much? 5t square minus 70 minus 60, and this is equal to 0. अब देखो, ये इजिली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगा नहीं। एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, वो कैलकुलेशन इंटेंसिव भी होता है, बट तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस उतने कैलकुलेशन इंटेंसिव नहीं आते एज फार एज आई हैव सीन, है ना, नहीं होते हैं। सो अगेन, बट वी कैन इजिली सॉल्व इट, और आपको आना भी चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस में होना चाहिए। सो यहाँ से आप b का वैल्यू निकाल लो, क्योंकि रूट आप क्या लिख सकते हो? रूट लिखोगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। एंड b क्या है तुम्हारा? b है टाइम का कोएफिशिएंट, a क्या होता है? t स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट, एंड d क्या होता है तुम्हारा? b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b तुम्हारा क्या है? 49, b का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि c इज माइनस 60, राइट? सो 4 इंटू 5 इंटू 60, and this is going to be 1249. So this will be near about, I mean, this is 1249. So ये approximately 35 से कम होगा, but approximately we can take it, जैसे यहाँ पे रूट लेना है ना, इसका जब हम रूट लेंगे तो इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं टू 35। ओके, सो आपको आइडिया होना चाहिए रूट कैसे कैसे निकाल सकते हैं। 30 का रूट क्या होता है? 900। सो 30 से ज्यादा होगा तुम्हारा, और 35 इससे थोड़ा 40 तक ज्यादा होता है, सम 30-35 ज्यादा होगा, बट अगेन वी कैन अप्रोक्सीमेट इट to be this one. Okay, so minus b, b is minus 7, so that will become 7 plus minus root under d, that is your 35, divided by 2a, that is 10. अब देखो, अगर आप यहाँ पे 7 माइनस 35 करोगे, नेगेटिव हो जाएगा, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम 0 से ही स्टार्ट होता है ना। सो 35 प्लस 7 करोगे 42/10, एंड दिस इज 4.2 सेकेंड, एंड एक्चुअली आंसर इतना ही क्लोज दिया हुआ है, ठीक है। सो योर करेक्ट आंसर शुड बी दिस वन। चलो, a ball p is dropped vertically and another ball q is thrown horizontally with certain velocity from the same height and at the same time. If air resistance is neglected, then अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक बॉल है, एक केस में तो मैंने इसे क्या किया? सिंपली ड्रॉप कर दिया। सो वी आर नॉट गिविंग इट एनी वेलोसिटी,
and we are simply letting it come down. Okay, और second case में ये कह रहा है कि okay, we are not giving it any vertical velocity, but initially we are giving it horizontal velocity u. Okay, so in both the cases ball will finally touch the ground. Which ball will reach the ground first? So ground first कौन बॉल रीच करेगा, क्या कह सकते हो आप? देखो दोनों ही बॉल को ग्राउंड को रीच करने के लिए इन वर्टिकल डायरेक्शन इट्स टू ट्रैवल डिस्टेंस इक्वल टू द हाइट. ओके, सो इस केस में भी h के बराबर चला है. और अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन यू यूज इन y डायरेक्शन, दैट इज along vertical sense, s is equal to ut plus half at square you will be doing. Let us treat downward direction as positive. So s is equal to h. In vertical sense, initially both the ball are having same velocity equal to 0. है ना? Because initially it is only given velocity in the horizontal direction, not in the vertical sense, right? So this is 0 and this is your half gt square, and time will be equal to 2h by g. So this will be the time. Then दोनों ही केस में सेम टाइम में वो टच करेगा. बट यहाँ पे देखो मोशन थोड़ा कुछ ऐसा होगा, ये हॉरिजेंटली नहीं जाता जाएगा क्योंकि देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड. सो समथिंग इज ट्राइंग टू pull it down also, and because of you it will go frontward also. So sort of इसका ट्रेजेक्ट्री ऐसा होता है जो कि हम हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में पढ़ते भी है, और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट यही होता है t इक्वल टू रूट अंडर 2h/g. ऐसे भी एक चीज आप हमेशा याद रखना, जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन रीड कर रहे हो and you have to calculate time of flight, always utilize s equal to ut plus half at square equation along vertical direction. ठीक है, इसको आप यूज करना, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा. एंड टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला डोंट रिमेंबर लाइक 2u sin theta by g, remember it like 2u y by g. So uy is what? Initial velocity in the y direction. So that way you should be using. सो यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली यूज करोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि यू वाई तो यहाँ पे 0 है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें नहीं मिल पाएगा, इसमें हम नहीं यूज कर सकते इस फॉर्मूला को. ये फॉर्मूला तुम्हारा इसके लिए यूज होता है, ऐसा केस होता है तब यूज करते हैं. डन. सो और भी डिफरेंट डिफरेंट केसेस में कर सकते हैं, बट नॉट हियर. यू कैन क्लियरली सेंस नहीं यूज कर सकते. डन. बट लॉजिक यही है, कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो प्रोजेक्टाइल का, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है इस इक्वेशन को यूज कर लेना वाई डायरेक्शन में, क्योंकि इस केस में नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, h 0 नहीं हुआ है. लेकिन इस केस में अगर आप देखो तो जब वो वापस से ग्राउंड से चल के ग्राउंड पे आएगा h 0 हो जाएगा, टाइम आप इजिली निकाल लोगे. समझ रहे हो? और बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे प्रोजेक्टाइल को आप यहाँ से थ्रो किए और सर्टेन हाइट पे पहुंचा, तो अगेन आप यहाँ पे देख लो, डिस्प्लेसमेंट एस का वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस हाइट. समझ रहे हो? सो I don't want to complicate things. I just want to give you one information that time of flight को निकालने के लिए we always utilize this equation in a vertical sense. Okay, चलो. Now a particle is dropped under gravity from rest from a height h. So you're dropping. Motion is happening along single direction and it travels a distance of 9h by 25 in the last second. The height h is. So last second में वो कितना कवर किया है? This much. Let us say it is taking time t in coming down. So in tth second, distance covered is how much? 9h by 25. And distance covered in tth second को आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे u which is 0. यानी कि half u is 0, right? Yeah, it is getting dropped. So half that will become how much? Half g. नहीं, formula use karna chahiye, a by 2 2n minus 1. Okay, so this is 2t minus 1, so this is going to be this much, and this is equal to 9h by 25. Done it? And this h can also be written as, I mean how much distance it will cover in t time, that is equal to h. So h can be written as half gt square by using second equation of motion starting from t equal to 0 to t time. Done it? So this is this. अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है height h. So if we know what is this time t, we can calculate height h. So time t निकालने की आप कोशिश कर लो पहले. इस इक्वेशन में h का वैल्यू पुट कर दो, हाफ जी टी स्क्वायर. सो दिस इज हाफ जी 2t minus 1 and this is equal to 9h, sorry 9 by 25, h को हटाती हूँ, that is your half g t का square. So this will get cancelled and then you're left with what? You're left with 25 2t minus 1 is equal to 9t square. So this is 9t square minus 50t and this is plus 25 equal to 0.
अब देखो इसको क्लियरली वी कैन ब्रेक इट लाइक -45 -5, क्योंकि 9 × 25 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 45 × 5। डन है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोल रही हूँ, ये तो बहुत ही बेसिक है। So 9t² -45t -5t +25 is equal to 0. So 9t t -5 -5 t -5 equal to 0. So we are getting 9t -5 and t -5 equal to 0. So टाइम का वैल्यू हमें दो मिल रहा है, एक है तुम्हारा 5 सेकेंड, दूसरा है तुम्हारा 5/9 सेकेंड। सो विच वन विल बी करेक्ट? 5 सेकेंड, क्योंकि 9/5 तो हो नहीं सकता, बिकॉज लास्ट सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड इज गिवन, इट मीन्स 1 सेकेंड तक तो वो एयर में जरूर से जरूर है। डन है। सो 5/9 is less than 1, so it cannot be true, right? So it is not true. T equal to 5 seconds, so h is equal to half into 10 into t ka square, that is your 25. So this is going to be 125, whatever is closest to this one, mark that. So this is this. Okay, I mean यहाँ पे g को 9.8 लिया होगा, we have taken this thing. Okay, चलो। Okay, now let us talk about this one. A body falls from a height h equal to 200 meter. The ratio of distance traveled in each 2 seconds during t equal to 0 to t equal to 6 second of the journey is. So in each 2 second it is getting asked. अब आप देख लो, body falls. So initial velocity is what? 0. Okay, and let's talk about. I mean, in it is falling from here. Let's say. So in first 2 seconds, by what distance it will fall through? So let us indicate it as 1. And this is equal to half into g into 2 ka square. So that is basically how much? That is going to be 2g. Okay, so that is 20 basically. And S2, let us talk about how much distance it will cover in first 4 seconds. Then we can easily calculate distance covered in 2 second to 4 second, right? So this is half g into 4 ka square. So that is going to be how much? This is your 80, right? So that is going to be 80 meter. Then now let us talk about S3, which is distance covered in 6 seconds. So, I mean, we don't know in 6 seconds it is hitting the ground. So we cannot do ki, okay, 4 seconds tak isne 80 cover kiya. Then in 0 से 6 seconds, it will be covering 200 minus 80. We cannot say that, है ना? So S3 आप निकाल लो, that is half G. I mean, I'm talking about starting from t equal to 0 to t equal to 6 seconds. So half G into 6 ka square. So this will become how much? I mean, this is going to be your 180 meter. अब आप देख लो, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड तक कितना है तुम्हारा? सो 0 से 2 सेकेंड के इंटरवल में डिस्टेंस कवर्ड इज योर 20 मीटर, एंड 2 से 4 सेकेंड के इंटरवल में डिस्टेंस कवर्ड इज हाउ मच? 80 minus 20. ठीक है, सो दैट इज योर 60 मीटर, एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? In interval 4 to 6 seconds, 180 minus 80, that is your 100. What will be the ratio? So ratio is 20 is to 60 is to 180. No, 180 minus 80, that is 100, right? So this is 100. Take the ratio, 20 को common ले लो. So 1 is to 3 is to 5. This is going to be this one. और अगर आप 1 सेकेंड के इंटरवल पे भी निकालते, जैसे 0 से 1 सेकेंड, 1 से 2, 2 से 3, यू विल बी गेटिंग सेम रेशियो, ऑड रेशियो ही हमेशा मिलता है, always remember. So यहाँ पे अगर you have history of solving kinematics, you already know that this is going to be this 1:3:5. And अगर तुम्हारा 6 से 8 सेकेंड की भी बात होती तो तुम्हारा यहाँ पे 1:3:5:7 आता। समझ रहे हो? आप उसको चेक भी कर सकते हो, जैसे S4 अगर मैं निकाल लूं, अगर मैं 7 सेकेंड की बात करूं तो हाफ इंटू जी इंटू 7 का स्क्वायर, दैट इज 49. So this will become 5 and this will become 5, and then this is 245 meter. Okay, and 180, I mean 245 minus 180, that will be equal to how much? 65. Am I right? This is 245, 180. So that is going to be 65.
this distance 65 होगा, right? So if we take it from 6 to, okay, 6 to 7 कर दिया मैंने, 6 to 8 करो ना, 2-2 सेकंड का इंटरवल लिया है ना, वही मैं सोचूं आंसर नहीं आ रहा. सो वी डिड सम मिस्टेक हियर. आई मीन 2 सेकंड के इंटरवल की बात हुई इस क्वेश्चन में. सो अचानक 2 सेकंड से 1 सेकंड एक साथ मिक्स नहीं कर सकते, राइट? सो हाफ जी इंटू 8 का स्क्वायर, एंड दैट विल बिकम हाउ मच? 320. और 320 से 180 को माइनस करोगे, यू विल बी गेटिंग हाउ मच? सो दैट इज योर 140. सो दैट इज 140. और अगर आप इसको रेशियो लेते हो, 20 कॉमन ले लो, सो 1:3:5:7. और इस इंटरवल के लिए भी यही आएगा. अगर आप 3 सेकंड का भी इंटरवल लेते हो ना, यू विल बी गेटिंग सेम ऑड रेशियो, 1:3:5:7:9 एंड ऑल. ओके, सो दिस थिंग यू शुड बी कीपिंग इन योर माइंड. चलो आगे बढ़ते. Now, a man in a balloon rising vertically with an acceleration of this. So there is a balloon and this is rising vertically with what acceleration? 4.9 meter per second square. And it releases a ball 2 seconds after the balloon is let go from the ground. So ground se balloon is let go with the acceleration this much in the upward sense. So in initial velocity is 0. And then it will start going up with this acceleration. द ग्रेटेस्ट हाइट अबव द ग्राउंड रीच्ड बाय द बॉल इज. और बलून के अंदर से बॉल को आपने कितने टाइम के बाद ड्रॉप किया है? 2 सेकंड के बाद. सो लेट्स से बलून इज हियर आफ्टर 2 सेकंड. So at 2 seconds, this balloon will be having certain velocity in the upward direction. So whatever ball you are dropping will carry velocity v in the upward direction. ठीक है? And then this ball, because of upward velocity, will first go up to certain maximum height and then it will come down. So maximum height of this ball from the ground will be equal to how much? Whatever distance this balloon has covered in 2 seconds, plus whatever maximum height this ball will be reaching because of this velocity p. So we are interested in calculating several things. First 2 सेकंड में ये कितना distance cover किया है, चलो उसको निकाल लेते. So s is equal to, its initial velocity is 0, so half into g, that is 4.9 into 2 का square. So this will become 9.8 meter. So ये तुम्हारा कितना है? 9.8 meter. Sorted. Now what will be the velocity v? So 2 सेकंड के बाद इस बलून का velocity क्या होगा? So v is equal to u plus at. U is 0 and I'm just treating let us treat downward direction as the positive. Okay, so down को अगर मैं positive लेकर चलूं, then I'm treating downward direction as the पॉजिटिव. ओके, सो v इज इक्वल टू कितना आने वाला है तुम्हारा? चलो साइन कन्वेंशन को अभी बोलते हैं, बिकॉज वी जस्ट नीड टू वरी अबाउट द मैग्नीट्यूड. सो u इज व्हाट? u हियर इज 0. ओके, एंड v विल बी इक्वल टू हाउ मच? a इज योर 10, राइट? a क्या है? 9.8 लेना है, बट चलो मैं 10 लेकर चलती हूँ. सो 10 इंटू t इज हाउ मच? 2. सो दिस इज गोइंग टू बी योर, या फिर यहाँ पे भी आंसर 9.8 के टर्म में आया, तो चलो 9.8 ही लेकर चलती हूँ. सो 9.88 into 2, then so this much is the velocity. Now because of this velocity, how much high this ball will reach, so that you need to calculate. अब आप calculate कर लो. v square is equal to u square plus 2a सब use कर लो. डन है. now v square at the highest point 0, u का स्क्वायर कितना होगा तुम्हारा? 9.8 into 2. मैंने कुछ तो गलत किया ना बलून का. ओके, सॉरी, बलून का एक्सेलरेशन मैंने 9.2 क्यों ले लिया? बलून का एक्सेलरेशन इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. डन है. सो एक्चुअली आई वाज गेटिंग कंफ्यूज कि देखो मेरे दिमाग में जो चल रहा था, आई विल डिस्कस. सो जब मैंने यहाँ पे v का वैल्यू, a को मैं देख रही हूँ डाउन जा रहा है, बट यहाँ पे बलून का एक्सेलरेशन डाउन नहीं है. सो इवन इफ वी टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, so if you take downward direction as positive, acceleration of this balloon is in upward sense, so that is positive, and that is 4.9 and 2. So this will be the velocity, and this is positive, means upward direction. डन है. सो बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ओके डाउन को मैंने पॉजिटिव तो लिया, सो ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन 9.8, and then this is
into 2, so that is coming positive. It means velocity should be in downward direction, but यहाँ तो positive लिया है मैंने, तो मेरे दिमाग में वो चल रहा था. बट आपको समझ में आया ना मैंने गलती क्या करी? मैंने गलती ये किया कि मैं completely भूल गई कि ये बलून का एक अपना एक्सेलरेशन था 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन. So against the gravity it is able to move because of certain force maybe is operating inside it, जिसकी वजह से इसका net acceleration up है. Okay, so I'm really sorry, I got distracted actually. So 4.9 into 2. अब यहाँ पे इसको put करो. 4.9 into 2 क्या होगा तुम्हारा? 9.8. So 9.8 का square and this is and then this ball is moving freely under gravity. So now acceleration of this ball when it is coming out of balloon and started moving upward is equal to acceleration due to gravity, right? And downward direction को हमने क्या लिया है? Positive लिया है, right? So plus 2as. So 2 into 9.8 into s. So s तुम्हारा नेगेटिव आएगा because it is in the upward direction. So s का वैल्यू तुम्हारा क्या होने वाला है? 9.8 by 2. So that is going to be how much? 4.9. Magnitude wise I'm writing. So 4.9. अब आप देख लो यहाँ से यहाँ ये कितना चला? This has traveled by 4.9 meter. So total distance covered is equal to how much? 9.8 plus 4.9 meter. So that is going to be equal to how much? 14.7 meter. Okay. So correct answer should be which one? It should be A. देखो जब भी आप फिजिक्स करते हो ना आपका टोटल कंसंट्रेशन क्वेश्चन की तरफ होना चाहिए. अगर थोड़ा भी आपका दिमाग इधर उधर जाता है, आप डिविएट करते हो, डिस्ट्रैक्ट करते हो, तो आप गलती करोगे. ठीक है. सो ये आप अभी अभी देख पा रहे थे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे कॉन्सेंट्रेटेड. दैट इज वाई कहते हैं ना बच्चों को थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए. दे शुड बी मोर अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, away from all sort of buzz that is going around, so that they can have a mind concentrated. Then so that is very important. Now, an aeroplane is moving with a velocity u. It drops the packet from a height h. The time t taken by packet in reaching the ground will be. So aeroplane है, ये कितने velocity से move कर रहा है aeroplane? u से. इसने पैकेट को ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करने का मतलब इट इज नॉट गिविंग इट एनी वेलोसिटी, बट सिंस इट इज कमिंग आउट विथ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इट विल कैरी विथ इटसेल्फ the velocity of moving object, but it will never carry the acceleration of that moving object. आप याद रखना इस चीज को, शायद मैंने जिक्र नहीं किया, बट यहाँ भी आप देखो जब बलून से ये बॉल बाहर आ रहा है, आई सेड कि इट इज कैरिंग विथ इटसेल्फ वेलोसिटी v in the upward direction, the velocity of balloon at that moment, but it won't carry with itself acceleration of balloon क्योंकि acceleration has to do with the force, and that force was acting on the ball till the time it was inside the balloon. The moment it will get separated from balloon, that force has been separated. Okay, so acceleration carry करके वो बाहर नहीं निकलता, velocity carry करके वो बाहर निकलता है. ठीक है. So this point should be marked. अब देखो यहाँ से जब पैकेट को उसने ड्रॉप किया, that packet is having velocity in this direction. So at this height, it will get dropped like this. So this is case of horizontal projectile. Time of flight is equal to 2h by g. Okay. So from height h, it was getting thrown, right? So time of flight will be 2h by g. So simply D. Simply need to mark it. अगर आप चाहते हो मैं इसको डिराइव कर दूं तो अभी कर देती हूँ. S इज इक्वल टू क्या लिखोगे? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लो. सो s इज इक्वल टू, s कितना होगा? इनिशियली इट इज एट हाइट h, फाइनली इट इज एट जीरो हाइट. ठीक है. सो फाइनल माइनस इनिशियल जब आप करोगे तो सिंस इट इज एट सर्टेन हाइट इन द अपवर्ड सेंस, इसका कोऑर्डिनेट आप नेगेटिव लोगे, बट ओवरऑल यू डोंट थिंक अबाउट दैट, यू जस्ट थिंक अबाउट कि डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? डाउनवर्ड. सो एस विल बी पॉजिटिव क्योंकि डाउन को हमने पॉजिटिव लिया है. सो एच इज इक्वल टू यू इज in the vertical direction, because this equation we are writing in vertical sense. So initially it has only horizontal velocity. This is 0 in vertical sense, so 0, and plus half into g into t का square. So t is equal to how much? 2h by g. Okay. चलो आगे बढ़ते. Okay, now let us start with we will be dealing now with the relative concept. So a train is moving towards east. So हमारे पास एक train है, this is moving towards east, and this is the train movement direction, and a car is moving along north, and car is moving along north. Chalo, sorted. So this is car direction, the observed direction of the car to the passenger in the train. So velocity of car to the passenger in the train, so with respect to train we are getting asked its direction. Okay,
बिकॉज मैग्नीट्यूड दिया नहीं है, वी ओनली हैव टू टॉक अबाउट डायरेक्शन. सो VCT का क्या मतलब है? देखो लॉजिकल मीनिंग तो इसका ये होता है कि व्हेन यू विल बी टेकिंग ट्रेन एट रेस्ट, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कार. दिस कॉन्सेप्ट विल बी यूजिंग वेरी मच इन द क्वेश्चन अहेड. अभी के लिए डायरेक्शन की तरफ चलते हैं. सो VCT को आप क्या लिखते हो, इसको ब्रेक कैसे करते हो? VC माइनस VT. And when we write VC, what is the meaning of this one? Meaning इसका ये होता है कि velocity of car with respect to ground. VT, velocity of train with respect to ground. So this G subscript here is the hidden thing. Okay. So this is this thing. अब देखो यहाँ पे ट्रेन की वेलोसिटी कितनी दी हुई है? इधर की तरफ दी हुई है. एंड कार का किधर है? इधर की तरफ है. सो VC माइनस VT आप करो. सो VC इज दिस वन, माइनस VT आप ले लो, माइनस VT विल बी दिस वन. So basically, this is addition of two vector. One is your VC and another is your minus VT. So इन दोनों vectors को आप add कर लो, इन दोनों को add करोगे, you will be getting result in somewhere here. Okay. So it will be in northwest direction. So northwest direction, that is your option B. Correct. चलो. सो वेक्टर थिंग आपका क्लियर होना चाहिए. मैं एक चीज बता दूं, रिलेटिव कॉन्सेप्ट को डील करने के लिए योर वेक्टर थिंग शुड बी क्वाइट क्लियर. ठीक है. सो वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. चलो आगे बढ़ते. A 100-meter long train crosses a man traveling at 5 kilometer per hour in the opposite direction in 7.2 seconds. Then the velocity of train is what? So we have a 100-meter long train. Suppose कर लो यहाँ पे आदमी रेस्ट में खड़ा है. अगर ये रेस्ट में खड़ा है, in that case, for this train will have so many compartments, है ना, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होंगे. सो इन ऑर्डर फॉर दिस ट्रेन लास्ट कंपार्टमेंट टू पास थ्रू दिस पर्सन, डन है, हाउ मच डिस्टेंस दिस ट्रेन मस्ट हैव कवर्ड इक्वल टू इट्स लेंथ, राइट. सो अगर ये पर्सन रेस्ट में है, देन यू विल बी सेइंग टाइम टेकन टू क्रॉस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय velocity of train. But here the question is, this person is not at rest, this person is moving in this direction. Then so how we can treat this person in rest and then calculate things very easily? So we can use relative concept. What we are going to do, we will be now calculating velocity of train with respect to man. इसका क्या मीनिंग है? इसका लॉजिकल मीनिंग ये है कि अगर आप मैन को रेस्ट में मान लेते हो तो ट्रेन की वेलोसिटी क्या होगी. डन है. सो दैट वी विल बी यूजिंग. सो VTM क्या होगा तुम्हारा? VT माइनस V. So let us take unit vector I cap in this direction and minus I cap in this direction. So velocity of train, let us say that is V. So that is in I cap direction. Okay, and velocity of man in the opposite sense. So that is 5. So we have taken in kilometer per hour. So minus 5 minus I cap. So this will become how much? V plus 5 I cap. So if you are treating man at rest, then velocity of train is how much? V plus 5 किलोमीटर पर आवर. तो आप टाइम निकाल लो. टाइम कितना होगा बताओ? टाइम विल बी लेंथ ऑफ ट्रेन दैट इज 100 मीटर बाय वेलोसिटी दैट इज v plus 5 एंड दैट इज गिवन एज इक्वल टू हाउ मच? 7.2 सेकेंड. बी केयरफुल विथ यूनिट्स ऑल्सो. ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर है, ये भी सेकेंड है. सो इसको आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो. सो 5/18. okay, so now simply solve it. So this is this and this will become how much? This is 20 and this is 5. So V plus 5 is equal to 50. So we have taken in kilometer per hour and then this will become 45 kilometer per hour. Sorted. So answer will be which one? It should be D. चलो आगे बढ़ते हैं. Two bodies are held separated by 9.8 meter vertically, one above the other. So we have two balls. And what is the separation between these two? This is 9.8 meter. They're released simultaneously to fall freely under gravity. So its initial velocity 0, its initial velocity 0, both started falling down with initial velocity 0. After 2 seconds, the relative distance between them. अब इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा आफ्टर 2 सेकेंड? तो देखो, जो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते आए हो ना, दिस इक्वेशन ऑफ मोशन always you can use for relative concept also to the long a is constant. Okay, so इस केस में मैं क्या करने वाली हूँ? I will be using relative thing. How? जैसे सपोज कर लो ये a है and ये b है. Now I'm going to calculate everything of a with respect to b.
So treating B at rest, I will be calculating velocity of A, acceleration of A, separation of A with B. Okay. So what is the separation of A with respect to B? A is up to that of B, right? So let us treat up direction as positive. So this is 9.8 meter. Okay. And what is the acceleration of A with respect to B? दोनों ही ग्रेविटी के अंदर फॉल कर रहा है, दोनों का acceleration g होगा. So g minus g, that will be 0. Okay. And what is the initial velocity of A with respect to B? दोनों का ही 0 है. So again 0. अब आप देख लो, अगर दोनों का एक्सेलरेशन रिलेटिव 0 है, इट मींस दोनों के बीच का सेपरेशन ut plus half at square is not going to change. S is not going to change. S तुम्हारा 9.8 है अभी, ये 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 है, a 0 है. So S is going to I mean change in, because यहाँ पे जो आप S लिखते हो ना, this is not exactly displacement, this is change in displacement, है ना? समझ रहे हो ना? This is change in displacement that we write. है ना? Are you clear, right? क्योंकि always I have taken initial final, so final minus initial, that is what we do. So S is not displacement, this is change in displacement. Also here S is not displacement, this is change in displacement. Okay, so I mean displacement is not going to change, it will stay what? It will stay constant. Done. So अगर ये constant रह रहा है means 9.8 it will stay. So answer will be which one? It should be your C. चलो आगे बढ़ते. A particle A moves due north at 3 किलोमीटर पर आवर. So we have a particle. और हमारा particle किधर की तरफ जा रहा है? Due north. At what speed? 3 किलोमीटर पर आवर. Okay. And this is A thing. Now another particle moves due west at 4 kilometer per hour. So it is moving in the west direction with a speed of 4 kilometer per hour. The relative velocity of A with respect to B. So VAB you have to calculate. So VA minus VB you need to do. Okay. So VA is in which direction? Towards north, and minus VB. This is the B direction, right? So minus VB will be in this direction. So basically this is VA, and VA minus VB will be somewhere where? I mean that was towards west. Okay, मैंने गलत बनाया यहाँ पे diagram. आप देखो क्वेश्चन में ये वेस्ट की तरफ बोला है. सो ओके लेट मी चेंज इट. आई एम रियली सॉरी. सो इधर की तरफ है एक्चुअली तुम्हारा बी, एंड बी इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट विथ स्पीड हाउ मच? That is your 4 kilometer per hour. You have to do VA minus VB. So VA is in distance, minus VB will be in distance. VA minus VB will be somewhere in this direction. Okay, and so it will be in this quadrant. But again, what will be the exact angle that we can calculate? Let us say this angle is theta. Parallelly translate VA vector. यहाँ पे मैंने translate कर लिया ऐसे, क्योंकि आप vectorially I mean vectors में, sorry, in chapter vector you can parallelly translate vectors, right? So यहाँ पे जैसे VA minus VB आप देख रहे हो ना, this is summation of two things, VA plus minus VB. और अगर आप इसको ऐड करते हो, इसका रूल क्या है? राइट, VA. सो हमने VA को लिख दिया, एंड देन ऑन द हेड ऑफ VA कीप द टेल ऑफ VB. सो टेल ऑफ VB क्या है तुम्हारा? ये टेल होगा. सो इसको B के हेड पे VB के टेल को रखा, सॉरी माइनस VB के हेड पे BA का टेल को रखा हमने, एंड देन कनेक्ट द टेल ऑफ माइनस VB टू द हेड ऑफ BA. So this will give you BA plus of minus VB, right? So वही चीज मैंने यहाँ किया है. अगर आप देखो ये थीटा है, this is how much? This is 3, this is 4. So tan theta is your 3/4, and this is going to be 37 degree. This is quite common value, है ना? आपको भी पता होगा. अगर तुम्हारा ये थीटा, if this is 3, this is 4, this is 5, so this is 37 degree here theta. और अगर तुम्हारा ऐसा है, this is 4, this is 3, and this is 5, in that case this theta is your 53 degree. ठीक है. सो एंगल तुम्हारा क्या होने वाला है? 5 किलोमीटर पर आवर विल बी द मैग्नीट्यूड. सो इन दोनों वेक्टर्स को आप पहले ऐड भी कर लो. सो दिस इज योर 3, दिस इज 4, एंड दिस टू वेक्टर्स आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. सो सम कर लो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2AB, दैट इज 2 into 3 into 4 cos थीटा. दोनों के बीच का एंगल क्या है तुम्हारा? Angle is between these two vectors is 90 degree, so cos 90, and this will become root under 25, and that is 5.
So it will be 5, but in which direction? 37 degree north of east या east of north? So off जहां भी आ रहा है, off के बाद जो भी है, angle is getting made with that. So 37 degree north of east कहने का मतलब it is making 37 degree with the east in northeast sense. Okay, so 37 डिग्री विथ ईस्ट, और यहाँ पे देखो ये एंगल क्या है, दिस इज गेटिंग मेड विद द ईस्ट एंड दिस एंगल इज 37 डिग्री, सो दिस विल बी करेक्ट. ये करेक्ट नहीं होगा. इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है ईस्ट ऑफ नॉर्थ कहने का मतलब दिस इज योर 37 डिग्री. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन शुड बी विच वन? इट शुड बी ए. चलो आगे बढ़ते. सो रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है और बहुत ही प्यार से अच्छे से समझना चाहिए हमें कॉन्सेप्ट को. So a man standing on a road has to hold his umbrella at 30 degree with the vertical to keep the rain away. So man standing on road. Standing कहने का मतलब man is at rest. And if man is at rest, then he feels like he has to hold his umbrella at 30 degree with the vertical. So कितने एंगल पे होल्ड करना है? 30 डिग्री. So this is direction of what? Direction of rain with respect to ground. क्योंकि man is at rest. Ground रेस्टिंग होता है. सो रेस्ट वाले फ्रेम से वेलोसिटी ऑफ रेन इज व्हाट? इन दिस सेंस. सो दिस इज BRG. And then he throws the umbrella and starts running at 10 kilometer per hour. Done है. He finds that raindrops are hitting his head vertically. And then he observes that raindrop is hitting vertically. What is the speed of rain with respect to ground? So VRG का वैल्यू हमें निकालना है. अब देखो इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि अगर वो पर्सन 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ता है, देन ही फाइंड्स रेन टू बी वर्टिकल. यू नीड टू कैच ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन. ठीक है, यही तुम्हें आंसर देगा. सो सबसे पहले आई वांट यू टू आंसर हियर. पॉज द वीडियो एंड think around that this person at rest will be moving in which direction. इस direction में move करेगा या इस direction में move करेगा. Okay, so you need to let me know this thing. Okay, so देखो मैं चलो, since this is not a live session, I cannot stop and let you think. So you think and then come back. Okay, so actually this man should be moving in this direction. And why I'm saying this one? क्योंकि देखो let me first solve it. So this is your what? This is your VRG, and this person starts moving in this direction. VMG. Okay, and then person observes that the rain is falling vertically downward. इसका मतलब velocity of rain with respect to man. Now man is moving. Okay, so no longer that vertical direction is with the ground frame. This is with the man frame. Man is moving. So that is in the downward sense. So VRM is in downward sense. और VRM तुम्हारा क्या होगा? VR minus VM. Okay, so now here you do VR minus VM. So VR is in this direction. And if I do minus VM, it will be in this sense. Done it? And in this case only, you can get resultant of these two in the vertical direction. जैसे VRM is what? VRM is the resultant of two vectors, that is VR and minus VM. So इन दोनों का resultant vertically तभी होगा if man has started moving towards left hand side of the road. समझ रहे हो? अगर ये राइट हैंड साइड चलता है, चलो मैं वो केस भी तुम्हें दिखाती हूँ. अगर ये राइट हैंड साइड चलता है ऐसे, then what will happen? You will be doing VR minus VM. Minus VM will become in this sense. And then minus VM and VRG का addition कहीं इधर चला जाएगा. So in that case, rain will appear to fall onto his head, not in vertically down sense, but rather now it will be making further more angle with the vertical greater than that of 30 degree. ठीक है, so ये कुछ ऐसा होगा. अब देखो इसको आप इजिली कैसे सॉल्व कर सकते हो. आपको पता है कि ये VR और माइनस VM का जो रिजल्टेंट है, दिस हैज टू बी इन वर्टिकल डायरेक्शन. इसका मतलब VR एंड VM का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है, दे आर गेटिंग कैंसल्ड. ओके, सो VM हैज ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. डन है, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 10 किलोमीटर पर आवर. This is minus VM direction. Okay, and then this VRG horizontal component will be how much? That is your VRG sine 30. So clearly VRG sine 30 in that is VRG into half should be equal to 10 kilometer per hour. So VRG should be equal to how much? 20 kilometer per hour. You don't need to go with the lengthy calculation ki chalo
इन दोनों को ऐड करके देखते हैं एट एन एंगल ऑफ 30 प्लस 90 दैट इज 120. यू डोंट नीड टू डू दैट, यू कैन सिंपली लुक एट द डायग्राम एंड आंसर कि अगर तुम्हारा वर्टिकल हो रहा है इसका रिजल्टेंट, इट मीन्स उनका हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स कैंसिल हो रहा है. सो वीएम हैज ओनली हॉरिजेंटल कंपोनेंट, सो दैट ओनली हॉरिजेंटल थिंग विल गेट कैंसिल्ड बाय हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वीआर. Okay, and that is VRG by half. So I hope it is clear. Now let us move ahead. A stationary man observes that the rain is falling vertically downward. अब देखो एक मैन रेस्ट में है, उसको रेन इधर आता हुआ दिख रहा है. So this is VRG direction. Okay. Now he starts running with a velocity of 12 kilometer per hour. He observes that rain is falling at an angle of 60 degree with the vertical. So in this case, you can take the man moving in any direction. Because with the vertical, it is making an angle of 60 degree. It can be either this side, doesn't matter. Okay. So आप कुछ भी ले सकते हो. चलो मैं कोई भी एक डायरेक्शन लेकर चलूंगी. Let's say man started moving in this direction. So velocity of man is equal to how much? 12 kilometer per hour. He observes that rain is falling at an angle of 60 degree with the vertical. So velocity of rain with respect to man is 60 degree with the vertical. So this is VR minus VM. So minus VM जब आप करोगे तो इधर होगा, and VR and minus VM का जो resultant होगा, that will go this way. So this is the direction of rain with respect to man, and that is making an angle what? 60 degree with the vertical. Now you can simply use this diagram in order to calculate VRG. तो देखो minus VM को मैं यहाँ पे parallelly translate करके लाती हूँ. ठीक है, so this is your minus VM and its magnitude is 12, right? So this is 12 and let's say this VRG is something V. So clearly you can see 12 by V is tan 30, right? So that is equal, sorry, tan 60. So that is going to be equal to root 3. So V is equal to 12 by root 3. So that will be 4 root 3 kilometer per hour. So ये आंसर कितना होने वाला है तुम्हारा? C will be the answer. Okay. चलो आगे बढ़ते हैं. The speed of a boat is 5 kilometer per hour in still water. It crosses a river of width 1 kilometer along the shortest possible path in 15 minutes. Then the velocity of river. अब देखो रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या क्या पॉइंट्स है जो तुम्हें दिमाग में रखना चाहिए in order to solve the question. सबसे पहले when it talks about velocity of boat in still water, इसका मतलब क्या है? स्टिल का मतलब क्या होता है? शांत. So if you are taking water at rest, then speed of boat is this. So basically this is velocity of boat with respect to river. First thing. And then next thing, let us talk about, जैसे river boat problem में you can be asked about shortest path. Shortest path taken or you can be asked about shortest time taken. ठीक है. So let us navigate through these two things. So suppose कर लो ये तुम्हारा नदी है. ठीक है. And this is river water is flowing in this sense. It is flowing like this. So let us call it velocity of river. Definitely with respect to ground. Okay. And now there is a swimmer and that swimmer is standing here at point O. And this swimmer wants to reach exactly opposite to the point O. That is, let us call it point P. So ये इस point पे पहुंचना चाहता है. चलो तुम स्विमर के फ्रेंड हो एंड यू आर जस्ट सिटिंग ऑन द बैंक लाइक दिस. आप यहाँ पे बैठे हो और इसको ऑब्जर्व कर रहे हो. आप खुद से पूछना कि अगर ये पी तक पहुंचता है, डन है, तो आपको ये स्विमर कौन से डायरेक्शन में तैरता हुआ दिखेगा? क्लियरली अगर आप ए पॉइंट से बी की तरफ पहुंच पा रहे हो, इसका सिंपल मीनिंग ये है दैट यू हैड वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन. सिंपल. अगर आपके पास कोई और डायरेक्शन की वेलोसिटी होती तो आप ए बी डायरेक्शन में ना पहुंच के कहीं और पहुंचते. So if it is reaching from O to P, it means from the ground frame, you can clearly say that it will have a velocity in this direction, complete velocity in this direction. Okay. So how it is possible? River water will try to throw this person in this direction. So this person should have some of its horizontal velocity in this direction, which is cancelling out this river velocity. इसीलिए तो हम ये कहते हैं कि when it is trying to take the shortest path to cross the river, that is OP, in that case the person will swim making certain angle theta with the river width direction. Okay, so ये है तुम्हारा VBR. That is the swimming velocity of person taking water at rest. Okay, so this is this. अब देखो यहाँ पे ऐसे भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि ये VMG होना चाहिए, सॉरी VBG होना चाहिए,
या मैन ले लेती हूँ यहाँ पे, VMG होना चाहिए, तो नहीं होगा क्योंकि VMG हैज टू बी अलोंग OP because it wants to reach from O to P, so its velocity has to be directed in this direction. समझ रहे हो? So this is VMR. और ऐसे भी आप देख लो, VMR प्लस VR जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? VM minus VR plus VR, so that is VM. So that is velocity of man with respect to ground, because if no subscript means with respect to ground. So समझ रहे हो ना? यानी कि इन दोनों को ऐड करना है आपको. ऐड करने का मतलब VMR का दो कंपोनेंट लिया, एक वर्टिकल, so let us call it VY, and one is horizontal, VX. So basically you are going to add three vectors, VY plus VX plus VR, है ना? VMR plus VR कहने का मतलब VY plus VX plus VR, and this VX plus VR should get cancelled. Done है? In order for this man to reach directly from O to P. Then so कुछ ऐसा आप करते हो when it has to move along the shortest path. Then जब उसको O से कहीं और डिविएट होके नहीं जाना, O से डायरेक्ट ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है. नाउ इन द शॉर्टेस्ट टाइम टेकन, इसका क्या मीनिंग है? देखो, इसका सिंपल मीनिंग ये है दैट इट वांट्स टू क्रॉस रिवर इन द मिनिमम टाइम. और ये कब कर पाएगा? रिवर को क्रॉस करने का मतलब क्या? आप इस रिवर को देखो, टू डिमेंशनल थिंग है. डन है? ये एक्स वाई एक्सिस है and this is x axis, let us say. Okay, so if it wants to cross river in the minimum time, for that it should have maximum velocity pointing in this direction. डन है? क्योंकि इस डायरेक्शन में जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तभी आप उस डायरेक्शन को मिनिमम टाइम में कवर कर पाओगे. सो दिस डायरेक्शन की वेलोसिटी मैक्सिमम करनी है. डन है? सो VM should be sort of what मैक्सिमम इन दिस डायरेक्शन. उसके लिए आप क्या करोगे? VMR को इसी डायरेक्शन में आप लोगे, सो दैट इसका कोई भी आई मीन इसका जो भी वेलोसिटी है दैट इज अलोंग दिस डायरेक्शन. सो इस डायरेक्शन में आपको मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि अगर कोई भी एंगल पे वो स्विम करता है देन सम ऑफ इट्स वेलोसिटी विल बिकम हॉरिजॉन्टल and then another component will be vertical. But आपको अगर vertical distance को minimum time में cover करना है, you have to start swimming in the direction of width of river. Okay, so कुछ ऐसा करोगे आप. और इस केस में definitely river will give you a push, and because of that you will be won't reaching directly to the point P. You will be getting thrown in this sense. Done है? But still you are crossing river in the minimum time. And then you are not reaching to the P, you are reaching this distance. And let's say you're crossing this distance in the minimum time equal to T minimum, then this distance will be equal to how much? Horizontally it has covered because of river velocity, so we are into T minimum. So this is whole the concept in river boat problem. Okay, now let us start with this one. It crosses a river of width 1 kilometer. So this is your 1 kilometer along the shortest possible path in 15 minute. सो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, यानी कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ वो ले रहा है. इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ, दिस पर्सन विल स्विम मेकिंग सर्टेन एंगल. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मिनिमम टाइम. ओके, देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर विल बी व्हाट? ठीक है, सो अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 minutes. So okay, let us call this as theta. So let us take it as B. This is VBR basically. So this is 5 unit. Okay. And this is theta. And this is your VR. That we don't know. So clearly you can see here that 5 sine theta should be equal to VR. Then only it will be able to, take the shortest possible path. Then only it will have only vertical component of velocity. So this is equal to this. And then it is crossing this in what time? 15 minutes. So 15 minute में वो vertically कितने distance को cover किया है? 1 kilometer को. Done है? So this y component of velocity, that is v cos theta, will be equal to this distance, that is 1 kilometer. चलो किलोमीटर में ही रखती हूँ, divided by 15 minute, and that is 15 by 60. So this is going to be this. V cos theta is equal to 4. Okay, and from here we can write one thing. जैसे this is V का value is given, right? So that is your 5 cos theta is equal to 4. So cos theta is equal to how much? 4 by 5. So what will be sin theta? आप triangle बना लो, इसको theta ले लो. So this is cos theta. So this is 4, this is 5. So this has to be what? 3.
So sine theta will be 3 by 5. So 5 into 3 by 5 is equal to VR. So this is going to be equal to, VR is equal to 3 kilometer per hour. This is going to be your answer. So answer will be option D. Okay. I hope you are clear with this one. Now let us talk about this. A ship X moving due north with a speed V observes that another ship Y is moving due west with the same speed V. Okay, then actual velocity of Y is. Question को ध्यान से देखो. There is one ship X which is moving due north. So velocity of X is in this direction and its magnitude is given as what? V. And this person X is observing that another ship Y is moving due west with the same speed V. So this is basically velocity of Y with respect to X. This is not velocity of Y. X is observing Y to be moving in this direction. So this is this. And its magnitude is also given as what? V. Then the actual velocity of Y will be what? So mathematically we can solve it very easily. So let us go that way only. क्योंकि देखो approach हमें वही लेना चाहिए which can give us answer very easily. So let us take a unit vector along north direction as j cap and along west direction as minus I cap. Here it will be plus I cap and in this sense it will be minus j cap. ठीक है. So Vyx is equal to how much? That is equal to Vy minus Vx. Okay, and this Vyx is equal to how much? V minus I cap, and this is equal to Vy, which is equal to V j cap, and minus this is okay. This is Vx. Sorry, Vy we don't know. I'm really sorry. Okay. Give me some time. So Vy we don't know. And this is equal to minus Vx is equal to how much? That is your V and then j cap. So this is this thing. Now Vy is equal to how much? That is your V j cap. And this is minus V I cap. So Vy is basically, it has two component of velocity, one along the north direction, another along the, which direction? Along along this direction. Okay. Clear? So this is V, this is V. What will be the magnitude of velocity of Vy? So two vectors at an angle of 90 degree. So that is going to be root under V square plus V square plus 2V cos 90, cos 90 0. So usko hum hatate hain root 2V. It will be this one. Okay. And in what direction? अगर आप डायरेक्शन इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो इक्वल वेक्टर्स है रिजल्टेंट विल बाइसेक्ट द एंगल सो दिस एंगल विल बी 45 दिस विल बी 45. Okay, so this is your Vy. So Vy is making an angle of 45 with the north, also 45 with the west. Equal angle. इसको हम बोलते हैं northwest direction. So root 2V towards northwest. B will be your correct answer. Okay. Chalo. Now this question is very easy. Just by reading the question, you will be taking the answer. A river is flowing from west to east, इधर की तरफ, at a speed of 8 meter per minute. A man on the south bank, so this is river, this is the south bank, and man is here, okay, capable of swimming at this in still water, wants to swim across the river in the shortest time. He should swim in a direction. So shortest time के लिए he should be keeping VMR in the vertical sense. So he should be swimming due north. Correct answer should be A. Now let us solve this question. A police jeep is chasing a culprit going on a motorbike. So हमारे पास एक पुलिस का जीप है and then there is one culprit and this police is chasing the culprit. The motorbike crosses turning at a speed of this. So इसको अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करते हो then 72 into 5 by 18 that will give you 20 meter per second. And the jeep follows it at a speed of this much. So with higher speed, then only it will be able to catch the culprit. So this into 5 by 18, that will become your how much? 25 meter per second. Crossing the turning 10 seconds later than the bike. Okay. So there is a turning basically, and that turning, this culprit is obviously crossing and then police is crossing this turning 10 seconds later on. So कह सकते हो at the time when culprit is crossing the turning, time difference between these two is going to be 10 seconds. क्योंकि 10 seconds के बाद ये पुलिस जीप जो है that will cross the turning. Assuming that they travel at constant speed, how far from the turning will the jeep catch up with the bike? So turning से कितने distance
की दूरी पे this police will be able to catch the culprit. Let's say this distance is this much. So let's call it x1. Okay. So if we know in what time police will catch the culprit, we can easily calculate this x1. X1 will be equal to how much? If we say police is able to catch culprit in t naught time, then x1 will be equal to distance covered by culprit in t naught time, right? So that will be equal to 20 t naught. So the basic thing is to calculate t naught. और देखो t naught हम कैसे निकाल सकते हैं? So if we calculate everything of police with respect to culprit, that is if we treat culprit at rest here, then what will be the velocity of police g? So that is vpc, and that is equal to vp minus bc. So vp minus bc तुम्हारा क्या होने वाला है? 5 meter per second. So if you treat culprit at rest, then you will be saying that, okay, police is chasing culprit with a speed of 5 meter per second. We know the speed, and but we don't have this distance, this separation. If we know this separation, we can easily calculate t naught. So how we can know this separation with this information? I mean, this police is able to cross this turning 10 seconds later on, with the time that culprit is crossing this turning, right? So 10 second later on कहने का मतलब क्या है? In 10 second, whatever distance this police has covered will be equal to this distance. Let us call it x naught. So x naught will be equal to speed of police g, that is 25, into this 10 seconds. So that is your 250. Okay, so this is 250. Now what will be this T naught? So T naught will be clearly equal to this 250 distance is getting covered by 5 meter per second, taking this culprit at rest. Because if we are taking at rest, then only we can say, okay, if police will cover this 250 meter, then police will be able to catch the culprit. Okay, so T naught will be equal to 250 by VPC, that is 5. So this is going to be 50 seconds. सो 50 सेकंड में वो उसको कैच कर लेगा. अब देख लो 50 सेकंड में ये कितना चला होगा. सो दैट इज 20 into 50, so that will become 1000 meter, and in kilometer you can write it like 1 kilometer. Okay, so this is going to be your answer. Okay, चलो आगे बढ़ते. An elevator is descending with uniform acceleration. Okay, हमारे पास एक elevator है, and this is descending, coming down with uniform acceleration, let's say a. And then to measure the acceleration, a person in the elevator drops a coin at the moment the elevator starts. So when elevator is just starting, at that point of time, there is one coin getting dropped. So the moment person is dropping the coin, there is no velocity with this accelerator. राइट. सो इस एलिवेटर के पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है. सो व्हाट आई वांट टू से इज कि जब ये पर्सन इसको ड्रॉप करेगा, इट मींस इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी जीरो. आल्सो इट वोंट कैरी द वेलोसिटी ऑफ दिस एलिवेटर, क्योंकि एलिवेटर के पास वेलोसिटी है ही नहीं. ओके, एट दैट पॉइंट व्हेन इट इज ड्रॉपिंग. डन है. The coin is 6 feet above the floor of elevator at the time it is dropped. So जब आप ड्रॉप कर रहे थे तो ये सेपरेशन तुम्हारा कितना था? 6 feet का. Now, the person observes that coin strikes the floor in 1 second. Person is inside left, right? And that person is observing this coin is hitting the floor in time 1 second. Calculate from this data the acceleration of elevator. So, elevator का acceleration क्या होगा? अब देख लो, हमें separation क्या दिया हुआ है? Floor से इस coin के dropping point का separation given है. So, if we calculate everything with reference to this elevator surface, that is with respect to elevator, then we can say that separation between this coin and the elevator is 6 feet. And then we need to check what will be the relative acceleration between these two. And then also we need to check what is initial relative velocity, that is 0, because दोनों ही rest में है initially. And then we can easily calculate the time. So let us talk about this one. What is the velocity of u of the coin? That is equal to 0. Also u of the elevator, that is equal to 0. What is acceleration of this coin? So it is falling freely under gravity. So its acceleration will be g in the downward direction. And what is the acceleration of elevator? That is your a in the downward direction. So, I mean, this is this thing. And what is the separation? Separation of coin with respect to elevator, that is your 6 feet. Sorted. Now let us calculate the relative thing. So relative initial velocity of coin with respect to elevator is 0, and relative acceleration of coin with respect to elevator will be equal to how much? That is going to be your g minus a.
Done. So this is this thing. Now you have to calculate time in which it will cover this distance. Okay. So initial separation, this is initial one. And what will be the final separation between coin and elevator? That has to be 0. So what is going to be that change in displacement? Magnitude wise, it will be 6 feet. Okay. So let us treat downward direction as the positive. So I mean 0 minus of minus 6 feet. That will give you 6 feet. So far you are familiar with that sign convention thing है ना. अब आप ज़्यादा comfortable होगे. So let us use this equation s equal to ut plus half at square. And if I use this one, this change in displacement has to be 6 feet. So 6 only I'm writing, and initial velocity is 0 relative, and this is half a value is how much? That is your g minus a, and then this is t का value तुम्हारा क्या है? 1 second. So 1 second का square. So from here you can see g minus a is equal to 12. So a is equal to how much? That is your g minus 12. So g का value feet per second square में क्या होता है? 32.2. So this is minus 12. So this will be 20.2 feet per second square. So this is going to be your answer. Okay. So question easy है. You just need to use the relative concept. चलो आगे बढ़ते. A boy standing on a long railroad car throws the ball straight upward. So हमारे पास एक long railroad cart है, and there is a boy standing here, and the boy throws a ball straight upward. So ये ऊपर की तरफ इसको फेंक रहा है. The car is moving on the horizontal road with an acceleration of 1 meter per second square. So इसका acceleration given है 1 meter per second square. And the projection velocity in the vertical direction is 9.8 meter per second. So this ball is getting thrown with this velocity. Okay. How far behind the boy will the ball fall on the car? ओके. सो ये बॉल बिहाइंड कितने डिस्टेंस पे फॉल करेगा? सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से समझो. जैसे आई हैव टोल्ड यू, व्हेन यू आर थ्रोइंग समथिंग और ड्रॉपिंग समथिंग फ्रॉम अ फ्रेम व्हिच इज हैविंग वेलोसिटी, then that body getting thrown or getting dropped will carry the velocity of body also. डन है. सो यहाँ पे अगर मैं बोलूं ग्राउंड पे, मैं यहाँ खड़े होकर अगर मैं इसके मोशन को काउंट करूं, तो मुझे ये समझ में आएगा. ओके. इसके पास ऊपर की तरफ इसको वेलोसिटी दिया गया 9.8, and because this person is standing on a car which is accelerating, let's say at the point the person is throwing the ball upward, this car has a velocity u, then that ball will come out with that velocity also, so it will have this velocity also. ओके. सो ये कुछ ऐसे होगा, यानी कि ग्राउंड फ्रेम से अगर आप देखते हो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इस बॉल को कुछ ऐसे और ऐसे वेलोसिटी देकर फेंका गया है. सो इट विल गो लाइक दिस. कुछ ऐसा लगेगा आपको. डन है. अब आप इसको क्लोजली एनालाइज करो, ये बॉल इस पर्सन के पीछे क्यों गिरेगा? दैट्स अ क्वेश्चन, राइट? सो इन टाइम टी, लेट्स से इट इज टेकिंग टी नॉट टाइम इन फॉलिंग डाउन. सो ये टाइम तुम्हारा किसके बराबर होगा? मैंने बोला है प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट आप कैसे निकालते हो? 2u/g. So uy value is given, that is 9.8, right? So 2 into 9.8 by 9.8. So that will become how much? 2 seconds. So 2 सेकंड के बाद वो गिरेगा. So 2 सेकंड के बाद vertically it will come down to this point. Done it. And in that 2 seconds, how much horizontal distance this ball in the air will cover? That will be equal to u into t naught. So this distance will be u into t naught. Agree? So 2 into u. And how much horizontal distance this cart will travel in 2 seconds? So cart, ये जो car है, that will cover s is equal to ut plus half at square. So u, I mean from that time at which this ball was thrown, and then the time that it took to come back to the car, वो time interval की बात करें, so that is 0 to 2 seconds. So u is equal to u, t is 2 seconds, and this will be equal to half a is 1, and then this is 4. Okay, so this will be 2u plus 2. So 2 मीटर ये ज्यादा कवर कर रहा है. कौन? कार. इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मीनिंग ये है कि ये जो है ये तुम्हारा इधर की तरफ कितना चला, ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैं सिर्फ काउंट कर रही हूँ. सो ये कवर किया तुम्हारा इधर की तरफ u plus 2 2u plus 2 मीटर. Okay, and how much this ball covered in horizontal sense? It covered only 2u. So ये point जब चल के यहाँ तक पहुंच चुका है, ball यहाँ है, so backward it will fall down. And question क्या था? How far behind the boy will the ball fall on the car? So how far behind?
कितने डिस्टेंस पीछे वो गिरेगा आप देख लो, इस पॉइंट से ये कितना डिस्टेंस पीछे है, दिस डिस्टेंस इज योर 2u एंड दिस डिस्टेंस इज 2u+2, सो कितना पीछे है तुम्हारा 2 मीटर, कितने टाइम में फॉल किया है 2 सेकेंड, सो दिस आर आंसर्स राइट, सो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट 2 मीटर। ठीक है चलो, अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ ट्रक मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 14.7 मीटर पर सेकेंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, सो देयर इज अ ट्रक and this truck is moving with what velocity, this is moving with a velocity 14.7 meter per second on a horizontal road. The man throws a ball in such a way that it returns to the truck after the truck has moved 58.8 meter. So जब ये ट्रक 58.8 मीटर ट्रेवल करता है, then ball returns to the truck, I mean it returns back. So कितने टाइम में वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा ट्रक, सो आप निकाल लो t इक्वल टू 58.8 सिंस इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सो बाय वेलोसिटी आप करोगे एंड दिस विल गिव यू 4 सेकेंड, so time of flight of that ball is going to be 4 seconds, then and this ball is getting thrown what, uh, okay, it is getting thrown, let's say upward something velocity से इसको फेंका है इस person ने, and since this truck is having velocity 14.7, it will come out with this velocity also, ठीक है, and then it has certain vertical velocity, vertical velocity आप easily निकाल सकते हो क्योंकि time of flight आपको पता है, so 2u_y by g is equal to 4 second, and this will become 2 and 2 into g, that is 20, so uy is equal to 20 meter per second. So this is going to be equal to how much? 20 meter per second. Then, so this is the thing. Find the speed and the angle of projection as seen from the truck, as seen from the road. So road से जब इस चीज को देखा जाएगा तो कैसा दिखने वाला है बताओ। अब तो आप लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, बता सकते हो मुझे, पहले से भी हो। I don't doubt your intelligence. I know students are way more smarter than anybody else. क्योंकि आप अक्सर पढ़ रहे होते हो ना, जो लोग पढ़ते हैं they are aware. सो ओके, ग्राउंड से जब मैं देखूंगी मुझे ये बॉल क्या दिखेगा, ऊपर की तरफ इट हैज अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड देन इन दिस डायरेक्शन इट हैज अ वेलोसिटी ऑफ हाउ मच, 14.7 मीटर पर सेकेंड, सो ग्राउंड के फ्रेम से आई विल बी सीइंग दिस बॉल गोइंग समथिंग लाइक दिस, sorted, and as seen from the truck, ट्रक से देखोगे तो क्या दिखने वाला है, देखो ट्रक इज हैविंग वेलोसिटी ऑफ 14.7 मीटर पर सेकेंड एंड दिस बॉल आल्सो हैज अ वेलोसिटी ऑफ 14.7 मीटर पर सेकेंड इन द हॉरिजॉन्टल सेंस, सो जितना ये बॉल हॉरिजॉन्टली चला उतना ही इस ट्रक का इस पॉइंट हॉरिजॉन्टली चला, डन है, सो ये भी यहाँ से चल के लेट्स से यहाँ आ गया, ओवरऑल ट्रक मूव कर रही है, सो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आया, इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल मतलब ये है कि आपने जिस बॉल को फेंका है आपको ऐसा लगेगा कि बॉल हमेशा आपके सर के ऊपर है, डन है, सो जब ये बॉल इतना हॉरिजॉन्टल कवर किया है, ट्रक का भी ये पॉइंट यहाँ से चल के यहाँ पहुंचा है, अगेन यू विल फाइंड दैट बॉल इज अबव योर हेड because आपका relative velocity in the horizontal direction is zero, and if it is zero then standing on the truck, if you have thrown the ball you will feel like okay it is only having vertical velocity, and also no matter where you are standing on the truck, you will only find only find that this ball is moving in the vertical sense, not in the horizontal, क्योंकि horizontal relative velocity is zero. So as seen from the road, you will find it going like this. And as seen from the truck, you will find it going like this. Sorted? So this is this concept. Now, let us talk about this one. A ball is projected from a point on the floor with a speed of 15 meter per second at an angle of 60 degree with the horizontal. So this is a sort of projectile thing. We are throwing it at an angle of 60 degree, and with what speed we have thrown it, 15 meter per second. So this is your 15 meter per second. Okay, will it hit a vertical wall 5 meter away from the point of projection and perpendicular to the plane of projection without hitting the floor? So will it hit a 5 meter, will it hit a wall which is kept at a distance of 5 meter? देखो इसके रास्ते में अगर वो wall आता है तो वो hit कर पाएगा, इसका मतलब that 5 meter, if this range is less than 5 meter, it won't be able to hit the ball, और अगर तुम्हारा this range is greater than 5 meter, अगर देखो यहाँ पे तुम्हारा वॉल यहाँ पे होता तो सिंपली ये इधर नहीं जा पाता, it would have hit the wall and then came back. Okay, so something like that. So for it to hit the wall, what should be the condition? Its range should be
what? It should be greater than that of 5 meter. So 5 meter it is. So range should be greater than 5 meter. Done it? So yeah, let us check. यहाँ पे रेंज क्या होगा? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? U square sin 2 theta by G. So this is going to be 225 into sine 120, that is your root 3 by 2 into 10. So this is going to be your this thing. So 15 into root 3 by 4. So I will be now taking the help of what? कैलकुलेटर का हेल्प लूंगी मैं, आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मुझे एग्जाम में देना, ठीक है? सो आई हैव दिस बेनिफिट, आई कैन यूज इट. ओके, u square sine 2 theta by g. So u square is your 225 and this is this thing 15. Okay, मुझे ये कुछ अजीब सा क्यों आ रहा है? I have written right formula, right? Yeah. Anyway, let me do it again. So this is 15. Okay, this one I'm doing mistake. अच्छा, ये मैंने 15 से कैसे कट कर दिया यार? This is 45, right? I'm really sorry. This will be 45. Okay. So इसलिए मुझे अजीब सा वैल्यू आ रहा था. 45 into root 3 by 4. Okay. So you just do this 45 into 1.732 and this is this divided by 4 and that will give you 19.48. So 19.48 is the range. Obviously 5 meter is way below that. So it will hit the wall and it is getting asked, will the answer differ if the wall is 22 meter away? So 22 meter पे अगर wall रखा हुआ है, range is less than 22 meter, so it won't be able to hit the wall. Done it? So yeah, answer is going to change in this case. Sorted? Chalo. Now we will move ahead with another question. So I just want to give you one thing, that is in projectile motion तुम लोगों को question बहुत ही simple आया है. I just went through all the PYQs. I've seen questions are simply putting the formula, getting the answer type question. HC Verma में भी ज्यादा advanced question नहीं दिए हुए हैं from projectile motion, very simple, and also in DC Pandey NEET. So basic चीजें तुम्हें याद रखनी है. Time of flight 2uy by g. एंड इसको निकालने के लिए हमेशा आई टोल्ड यू यूज दिस इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इन द y डायरेक्शन. इसको यूज करना है, ठीक है? एंड देन रेंज विल बी इक्वल टू ux इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, सो दैट विल गिव यू 2uy ux by g. And then what will be this maximum height? So that is equal to 2uy square by g. So this is what you will be getting. है ना? 2u square sin square theta, नहीं, uy square by 2g, sorry, uy square by 2g. This will be the height का formula. Okay, and these formulas are for this ground to ground projectile. If it is not ground to ground projectile, things may differ, so you have to be careful in that case, those cases. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं and आगे बढ़ के let us do this question. And this is one very beautiful question of relative concept. So let us have a look at it. An aeroplane has to go from point A to another point B, 500 kilometer away due 30 degree east of north. So एक एरोप्लेन को कहां से कहां चलना है? A से B की तरफ जाना है. And A to B is what? It is making an angle of 30 degree with the vertical, with the north, right? So this is this thing. A wind is blowing due north at a speed of 20 meter per second. So इधर की तरफ wind है, 20 meter per second से blow कर रहा है. Now the air speed of the plane is 150 meter per second. What is the air speed of plane? Air speed of plane कहने का मतलब velocity of plane with respect to wind. जिस तरह से आपने river boat problem में देखा, that was the, I mean that was the we were talking about velocity of person swimming or boat I mean boat there in the water with respect to still water. Done it? So वही है यहाँ पे air speed of the plane, that is steering capacity of that plane, उसका value क्या होगा? So that is your VPW and this is equal to here 150 meter per second. Okay, so देखो river में जब boat, I mean when boat is there in the river and when plane is there in the air, cases same है. Done है? दोनों ही fluid है और fluid में something is moving, so same concept will apply.
Find the direction in which the pilot should head the plane to reach point B. अगर प्लेन को B पॉइंट तक पहुंचना है स्टार्टिंग फ्रॉम A, then in which direction that pilot should be heading towards, किधर जाना चाहिए बताओ. So this is, अगर तुम पहले मैथमेटिकली चीजों को समझ लो, so VPW plus VW will be giving you what? Will be giving you VP, because this is Vp minus Vw plus Vw, so that is giving you Vp, that is velocity of plane with respect to ground. और अगर प्लेन को A to B डायरेक्शन में जाना है, then इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मीनिंग ये है, someone standing on the ground will find that plane is moving in this direction. समझ रहे हो? But someone riding with on the wind, अगर कोई 20 मीटर पर सेकेंड अप डायरेक्शन में जा रहा है, उसके लिए वो ए बी की तरफ नहीं दिखेगा. समझ रहे हो ना? I hope you're understanding. I won't complicate it further. So this is VP, and VP has to be in this direction. कहने का मतलब VPW plus VW has to be in this direction. So in which direction the pilot should be heading? सबसे पहले आप देखो, दिस इज समेशन ऑफ दिस टू थिंग्स. सो लेट्स से ये जो पायलट है ये कुछ इधर की तरफ हेड कर रहा है, एंड दिस इज योर ए टू बी. This is your A to B, and this is your VPW, and this is your VW. So इन दोनों का रिजल्टेंट तो कहीं इधर से जाएगा. So in this case it won't be able to head towards AB. Done it? So this will be a mistake. अब देखो VPW को एक्चुअली इधर होना चाहिए. अगर ये इधर होता है then इन दोनों का रिजल्टेंट can be in the AB sense. Done it? So this is the possibility. So possibility आपको किधर दिख रहा है? Not this side. It will be this side. Okay? और ऐसे भी इसको और आप समझ सकते हो, जैसे देखो ये जो VPW है, दिस विल हैव टू कंपोनेंट, वन अलोंग द हॉरिजॉन्टल and another along the vertical. So in it should be making angle with the horizontal, and that angle should be in such a way that this vertical component is a bit smaller, क्योंकि wind is going to give it vertical speed. So उसका जो भी steering speed है 150 मीटर पर सेकेंड, उस speed का maximum component it has to give in the horizontal sense, क्योंकि vertical sense में उसको velocity देने के लिए wind भी है. सो अगर अगर वो जैसे VW के बराबर अगर वो वर्टिकल सेंस में ले लेता है, तो दैट वुड बी ए मिस्टेक, राइट? सो ये एक लॉजिकल सा अप्रोच है. जब आप फिजिक्स नहीं समझते तब आप क्या समझोगे? तब आप ये समझोगे कि इस पायलट को वर्टिकल वेलोसिटी देने के लिए विंड भी है. डन है? सो वो अपने स्टीयरिंग स्पीड को इस तरह से यूटिलाइज करेगा सच दैट it won't be, I mean, taking that velocity component maximum along y direction. Maximum will be along the x direction. And then wind की velocity add होकर that will take it along AB. So यहाँ पे basically क्या करोगे आप? चलो अब मैं ज़्यादा तुम लोगों को logically नहीं समझाऊंगी, नहीं तो confusing हो जाएगा. So let us talk about इधर की तरफ ये head किया. ठीक है, ऐसे भी आप कैलकुलेशन से समझ रहे हो. सो इसके साथ क्या ऐड होगा? इसमें ऐड होगा तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ विंड, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड. ये दोनों ऐड होकर किधर की तरफ जाएंगे? AB. सो दिस विल बी द परफेक्ट डायग्राम. So it should be making this angle with the AB direction for plane to go towards AB. Okay, so कुछ ऐसा. अब ये वैल्यू आपको निकालना है. You can easily do it by using mathematics. So VW is known, right? That is 20 unit, and VPW is known, that is 150 unit. Okay, and this angle, I mean this angle is known. This angle is how much? 30, because ये वाला angle तुम्हारा 30 है. So this is 30, and this will be 30. Let us say this angle is theta. So now we will be using one thing जो कि तुम्हारा मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं. जैसे ये ट्राइंगल है, let us say this is theta 1, and let us say this is theta 2, and this is your theta 3. Okay, and then let us say this side length is A, this is B, this is C. Then we can write one thing, A divided by sine of opposite angle. A से opposite angle क्या है? theta 2. So sine theta 2 will be equal to B divided by sine of opposite angle. So that is B by sine theta 1, and then C by sine theta 3. So this is what we are going to utilize here. ये सब वेक्टर्स में वेक्टर्स के थिंग को आसानी से सॉल्व करने के लिए दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स यू शुड बी नोइंग इन द मैथमेटिक्स आल्सो. सो यहाँ से देखो VW by sin theta will be equal to VPW by sin 30. ठीक है, so VW will be is equal to 20, and this is sin theta, and this is 150 divided by 1 by 2.
Okay, so this will get cancelled, this will get cancelled, and sine theta is equal to 1 by 50. So theta value is how much? That is your sine inverse 1 by 50. So this is going to be your answer. Now find the time taken by plane to go from A to B. So A to B जाने में कितना टाइम लगेगा? अगर आपको टाइम निकालना है तो आप सिंपली ये कहोगे कि ओके फ्रॉम A to B distance is 500 and what will be the velocity? I mean, what is VP? That you need to calculate vectorially. So angle between these two vectors, ये वाला angle आपको पता होना चाहिए. So 180 minus 30 minus theta. But here sin inverse 1 by 15 का angle value नहीं given and all. So we don't need to go into complications क्योंकि अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वैल्यूज विल बी प्रोवाइडेड. ओके, क्योंकि आज तक जेई मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जहां पे दे विल एक्सपेक्ट यू टू नो सच वैल्यूज. ओके, सो इट इज नॉट समथिंग दे वांट आउट ऑफ यू. सो आई वोंट ड्रैग यू इनटू ऑल दिस अननेसेसरी थिंग्स. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ दिस इज वन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. वैसे जेई एडवांस वगैरह में इसके काफी ज्यादा वेरिएशंस होते हैं बट आपको बहुत ही सिंपल चीजें जाननी है. एंड दिस थिंग इज देयर इन द एचसी वर्मा से ही तो मैंने उठाया है ना? या सॉरी, हाँ वहीं से लिया है. Now let us talk about six particles situated at the corner of a regular hexagon of side A moves at a constant speed v. So हमारे पास क्या है? देखो हमारे पास एक regular hexagon. So it looks something like this. Okay, this is where I fail actually. I'm so bad at making diagrams. I really want to improve. So this is this thing. Okay, ये है तुम्हारा regular hexagon. Okay, and then six particles are there. So यहाँ पे एक particle है, यहाँ, and here and here and here. Let us name them. So this is A, B, C, D, E, F. Now they move at a constant speed v. Each particle maintains a direction towards the particle at the next corner. कहने का मतलब कि एक particle की velocity जो है वो दूसरे की तरफ पॉइंटेड है. सो ए की वेलोसिटी एफ की तरफ, एफ की वेलोसिटी ई की तरफ, ए की डी की तरफ, एंड डी की वेलोसिटी सी की तरफ, एंड सी की वेलोसिटी बी की तरफ, ऐसे पॉइंटेड है. ओके, कैलकुलेट द टाइम द पार्टिकल्स विल टेक टू मीट ईच अदर. सो कितना टाइम लगेगा? वैसे तो आप सिंपल ऐसा थोड़ा सा इसको विजुअलाइज भी करना चाहिए. जैसे देखो, अगर मैं देखूं ए और एफ की बात करूं, सो व्हाट इज, आई मीन सेपरेशन ऑफ ए एंड एफ. What is relative distance between A and F? That is equal to side of this hexagon, so that is equal to A. Now what is the relative velocity of A with respect to F? So F की velocity इधर की तरफ है and इसके along आप देख लो क्योंकि separation is along this line, so along this line we need to check for relative velocity. ये angle तुम्हारा कितना होगा? This is 120, this will be 60. So velocity of F along this line of separation will be equal to how much? V cos 60. So it seems like we have a thing, something like A distance से separated है दो particles. इसकी velocity इसके तरफ V है और इसकी velocity away from this is V by 2. Okay, so what is the relative velocity? So if you calculate here the relative velocity, that is V minus V by 2. Okay, so that is going to be your V by 2. Sorted? It will be this one, right? Yeah. So this is going to be, this is V cos 60. That will be V by 2 and they are in the same direction. है ना? So relative velocity will be this one. I mean, let us call it particle 1 and this is particle 2. So particle 1 की velocity with respect to 2 will be equal to how much? That is your V by 2. And what is separation between them? A. So how much time they will be taking in order to kill this separation, in order to make this separation 0. So that will be initial relative separation, that is A, divided by relative velocity, that is your V by 2. So that is going to be your 2A by V. सो दिस इज द टाइम दे विल बी टेकिंग. और ये विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. एक्चुअली होगा क्या, टाइम के साथ इनके बीच का सेपरेशन घटेगा. सो टाइम के साथ दे विल बी फाउंड एट हेक्सागन, बट वो हेक्सागन कुछ ऐसा होगा जिसका साइड लेंथ स्मॉलर होगा. ठीक है, सो देखो धीरे धीरे क्या होगा. मैं थोड़ा सा टाइम लेती हूँ, इसको थोड़ा सा आपको बताती हूँ. सो आई मीन ओके, सो मैं यहाँ पे बनाती हूँ. एक्चुअली क्या होगा, इनिशियली अगर बहुत बड़ा है धीरे धीरे ये घटता जाएगा. सो धीरे धीरे ये ऐसे हेक्सागन का साइड घटता जाएगा. समझ रहे हो? ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे.
सो ऐसे 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 ऐसे. सो ग्रेजुअली क्या हो रहा है ना, दिस पार्टिकल्स विल बी फाउंड एट वर्टिसेस ऑफ दिस स्मॉलर हेक्सागन. डन है. और धीरे 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 करते करते वो कहाँ मीट कर जाएंगे? एट द सेंटर ऑफ दिस हेक्सागन. सो दे विल बी मीटिंग एट द सेंटर ऑफ दिस हेक्सागन. सिमिलरली ये क्वेश्चन तुम्हारा ट्राइंगल के लिए भी पूछ सकता है. अगर तुम्हारा ट्राइंगल है और यहाँ पे एक पार्टिकल है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, सच दैट they are pointing towards each other. So 1 is towards 2 and 2 is having velocity towards 3 and 3 is having velocity towards 1. Let us say this is equilateral triangle. So this is A. ठीक है, क्योंकि तुम्हारा सिमेट्री इस क्वेश्चन में उनको देना पड़ेगा, अदरवाइज थिंग्स विल बी वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड. सो दिस इज दिस थिंग. अब यहाँ पे आप देख लो, 1 की वेलोसिटी टुवर्ड्स 2 कितनी है? तो 2 की वेलोसिटी, आई मीन दिस इज 60 डिग्री. 2 की वेलोसिटी विल बी in this direction will be equal to v cos 60. And you can clearly sense here, I mean, what is the relative separation between these two? So relative separation between these two is A. And what is relative velocity? So V minus of minus V by 2, because these two velocities are directed opposite, right? So this is your 3V by 2. So time taken will be equal to A by 3V by 2. So 2 and 3V. Done. So yeah, this is this thing. I hope it is clear. Now let us talk about this question. Two friends A and B are standing at a distance x apart in an open field and wind is blowing from A to B. So there are two friends A and B and the wind is blowing in this direction. So let us mark it. A beats the drum and B hears the sound T1 time after he sees the event. So यहाँ से sound निकला and it is able to reach to B in what time? In T1 time. ठीक है. A and B interchange their position. So now they are interchanging their position. B is here and A is here. So इस केस में तुम्हारा साउंड वेव ऐसे ट्रेवल किया था. Now the time, this time B hears the drum T2 time after he sees the event. So sees the event कहने का मतलब when the drum was struck, right? And let's say that time is 0. So that time onward wave will start traveling. So ये ऐसे wave ऐसे गया इधर की तरफ and it is reaching B. Then and in what time it is reaching B? This time T2. Calculate the velocity of sound in still air. Still air, okay. Calculate this velocity of sound in still air V and the velocity of sound U. Okay, what we have to calculate? Okay, I need to check with this one. Okay, just give me some time. Okay. So yeah, whatever I've written is correct actually. So calculate the velocity of sound in still air V. So V we have to calculate basically. Velocity of sound in still air is given as V. V we have to calculate in terms of x T1 T2 and also the velocity of wind, that is U. So how we will be doing this one? So see here, velocity of sound in still air. Let us say that, that is given as V and this is given as U. So what will be T1 in this case? If you see, velocity of sound with respect to ground will be equal to how much? Velocity of sound in still air plus velocity of air, that is wind. So let us write as W. So this is this. So VSG, that is velocity of sound with respect to ground, is this much. And according to variables given, this is equal to V and this is equal to U. So this is this much, right? समझ रहे हो? Vs minus Vg. They are in the same direction, right? In the first case, they are in the same direction. Vw and the velocity of sound is also in the same direction. In this direction also, only it is traveling. So V and U are in the same direction. I have written V plus U. Now what will be this T1? So T1 will be equal to X by V plus U. Now let us talk about second scenario. So second scenario, if you go on to write velocity of sound with respect to ground, that will be equal to how much? Velocity of sound with respect to air, that is V, and that is in this direction, right? And velocity of wind is in this direction. So this is going to be how much? This is going to be VSW vectorially plus VW. You have to add these two. And if you add it, you will be getting V minus U because they are oppositely directed. Then so simply we will be adding them and one is in opposite direction. So minus sign will come. Now T2 will be equal to how much? X by V minus U. Now we have to calculate V plus U and V minus U. Sorry, we have to calculate V and U in terms of
एक्स T1 T2. सो v प्लस u को आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे x by T1 एंड v माइनस u को आप क्या लिखोगे, दैट इज x by T2. So add these two, you will be getting 2v equal to x 1 by T1 plus T2. Okay, so v is equal to how much, x by 2 1 by T1 plus 1 by T2. Okay, and similarly you will be getting the value of u, right? So क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, हमने स्टिल एयर का कॉन्सेप्ट देखा, स्टिल water का concept देखा, and then we know what is the velocity of that thing moving in air or floating in water or traveling in water with respect to ground. So for that we will be adding this thing. Done it. So we have done a lot of question around this one. Now it should not be bothering us. So this is sorted, right? So now we are going to do PYQs. Okay. So this came in year 2025. So the recent one. And this question is a good question, I would say, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा पिक्चर बनाकर सही से सोचने की जरूरत है. And I strongly suggest कि आप इस क्वेश्चन को जरूर कीजिए खुद से बैठकर, ठीक है? और मे बी आपने किया भी होगा. So let us talk about the question. Two cities X and Y are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every 10 minutes. So this is X station, this is Y station. Bus is living in this direction and also in this direction every 10 minutes. Okay, a girl is driving a scooty with a speed of this. So there is a girl driving a scooty with a speed from X to Y. So इस direction में वो scooty drive कर रही है. Then and speed is given. She notices that a bus goes past her every 30 minutes in the direction of a motion and every 10 minutes in the opposite direction. So इस direction में बस जो पास करती है वो every 30 minutes पे, and इस direction में जो बस पास करती है इस स्कूटर को, that happens in every 10 minutes. ये क्यों जल्दी हो रहा है, क्योंकि आप ध्यान से देखो ये Y स्टेशन है, ठीक है, and this scooter is coming in this direction. And bus coming, let's say this is bus moving in this direction has velocity v, let's say, and this has a velocity of 60 kilometer per hour. Okay, so if I calculate what is the velocity of this bus with respect to the scooter, so that will be equal to v minus of 60, because I mean this 60 is in opposite direction, so sign convention you will be using, and this is v plus 60. Done it. And then whatever is the separation, that separation it will be covering in certain time, and then it will be crossing this scooty. Okay, दूसरे डायरेक्शन की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे x ले लो and this is scooter. Okay, so bus coming from here has a velocity v in this direction and this scooter has a velocity of 60 in this direction. So what is the relative velocity of bus with respect to scooter? That is v minus 60. So यहाँ पे relative velocity कम है, इसलिए it will be taking more time in order to reach to the scooter position, and here relative velocity is greater, and that is why it will be reaching to the scooter position in lesser amount of time, and that is why 10 minutes. Okay, so ये चीजें समझना बहुत जरूरी है. Choose the correct option for the time period t of the bus service and the speed of buses. So t का वैल्यू क्या है and speed of bus क्या है, ये आपको निकालना है. देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आई मीन यू जस्ट नीड टू बी क्वाइट लॉजिकल, यू जस्ट नीड टू थिंक. सो अगर मैं ये बोलूं कि हमारे पास सपोज कर लो एक्स एंड वाई, कोई भी एक स्टेशन ले लो, उससे बसेस निकली, सो दो बसेस के बीच में टाइम का सेपरेशन कितना होगा, टी मिनट्स का, बिकॉज आफ्टर एवरी टी मिनट्स वन बस इज गेटिंग रिलीज फ्रॉम स्टेशन एक्स एंड ऑल्सो फ्रॉम वाई. ओके, सो दो बस के बीच का जो टाइमिंग का सेपरेशन होगा कमिंग फ्रॉम एनी स्टेशन विल बी इक्वल टू हाउ मच, टी मिनट्स. ठीक है, और अगर ये टी मिनट्स है देन डिस्टेंस का सेपरेशन कितना होगा, वी टी, बिकॉज वी इज द स्पीड ऑफ बस. जैसे टी इक्वल टू 0 पे एक बस निकली, ठीक है, सो ये कितना डिस्टेंस कवर किया होगा बाय द टाइम सेकेंड बस विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हियर. सो सेकेंड बस यहाँ से निकलेगी, वो कितने टाइम के बाद निकलेगी, टी मिनट्स. सो टी मिनट्स में ये पहला बस कितना डिस्टेंस चला होगा, वी टी. सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बसेस, वी टी. सो ओवरऑल वी विल से दैट कोई भी एक स्टेशन से जो बसेस निकल रही है उनके बीच में टाइम का डिफरेंस टी मिनट्स है एंड डिस्टेंस का डिफरेंस इज वीटी. ये तो क्लियर है. अब देखो यहाँ पे आप ले लो स्कूटर, ठीक है, एंड लेट अस से एट टी इक्वल टू 0 यहाँ से एक बस पास करती है. मैं एक स्टेशन से आने वाली बसेस की बात कर रही हूँ, ठीक है. सो इस डायरेक्शन में स्कूटर के डायरेक्शन में ही एक बस क्रॉस करती है. So after 30 minutes, another bus will cross this scooter, right? So मैं ये कह सकती हूँ कि इस बस से एक 30 minutes behind एक और बस है, which will be crossing this scooter, ठीक है. So इन दोनों बसेस के बीच में कितने का डिफरेंस है, 30 मिनट.
And if we take this scooter at rest, that is, if we calculate everything of bus with respect to scooter, then we will say what is this time ka difference, sorry, distance ka difference. So that will be velocity of bus with respect to scooter aap nikal lo. So this is your VB minus VS, and that in this case is going to be V minus 60. And then V minus 60 into 30 minutes is going to be what? Is going to be this separation. Done it? एंड ऑल्सो आपको भी पता है कि इन दोनों बसेस के बीच का सेपरेशन कितना है, वीटी भी है. समझ रहे हो ना, मैं कह रही हूँ टी इक्वल टू 0 टाइम पे एक बस क्रॉस कर रही है एंड उससे 30 मिनट्स बिहाइंड एक बस होनी चाहिए, बिकॉज आफ्टर एवरी 30 मिनट्स वन बस विल क्रॉस अ स्कूटर. डन है. सो 30 मिनट्स के सेपरेशन पर है, एंड देन फ्रॉम रिलेटिव कॉन्सेप्ट वी कैन कैलकुलेट दिस सेपरेशन. बट वी ऑलरेडी नो दिस सेपरेशन फ्रॉम द बस कॉन्सेप्ट. टू कंसेक्यूटिव बसेस के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, v इंटू टी. सो वी कैन क्लियरली से हियर, आई मीन यहाँ पे हमें ये क्लियरली दिख रहा है एक्चुअली दैट v माइनस 60 into 30, v minus 60 into 30 will be equal to vt. डन है. एंड सिमिलरली जो वाई स्टेशन से जो बसेस आ रही थी उनके लिए भी सेम थिंग हम कर सकते हैं. सो v प्लस 60 इंटू 10 विल बी इक्वल टू vt. डन है. इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐसे कट कर लो. सो v माइनस 60 इंटू 30 इज इक्वल टू v प्लस 60 इंटू 10. ठीक है. सो दिस गॉट कट. 3v minus 180 is equal to v plus 60. So 2v is equal to 240. So v is equal to 120 kilometer per hour. Okay. So this will be the answer. Now what will be this t? t को आप कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लो. फर्स्ट इक्वेशन इसको मैं यूटिलाइज कर रही हूँ. सो v is equal to 120 minus 60 into 30 is equal to v into t, and v is 120 into t. So this will get cancelled. This is 4. So 4t is equal to 60. So t is equal to 15 minutes. So this is going to be your answer. वेरी लॉजिकल वे में मैंने अप्रोच किया एंड आई जस्ट टोल्ड यू कि क्या होगा. सो यहाँ पे थोड़ा ठंडे दिमाग से तुम्हें सिचुएशन को देखना है. डन. सो आंसर शुड बी विच वन, इट शुड बी 4. आई होप इट इज क्लियर. चलो, क्वेश्चन बहुत इजी है. मैं कह रही हूँ अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया उससे बहुत इजी होने वाले हैं और सारे क्वेश्चंस. In some appropriate units, the relation between time and position of moving particle is given as this. So the acceleration of particle will be what? So t is given, acceleration पूछ रहा है. So what we will be doing? Differentiating with respect to time. So dt by dt will be equal to dx square by dt plus dx by dt. You should be clear with the differentiation and integration. So this will be 2x. I mean इसको चलो मैं काम करती हूँ, मैं तुम्हें थोड़ा और हेल्प करती हूँ. So we can write it like dx square by dx into dx by dt. This is how we can do it. क्योंकि dx dx cancel होगा, it will be dx square by dt plus dx by dt. So this will be dx square by dx क्या होगा, 2x into velocity plus velocity, and this is equal to 1. So यहाँ से हमें velocity मिल रहा है. Velocity is equal to how much? That is equal to 1 by 2x plus 1. But we have to calculate acceleration. So let us call it equation 1. And equation 1 को आप फिर से differentiate कर लो. Let us differentiate it फिर से with time. So d1 by dt is equal to, this is your d2xv by dt plus dv by dt. Constant का differentiation 0 and there are two variables here, x and b. So पहले आप v को constant मानो and then I mean 2 तो 2 एक constant है, 2 को पहले आप बाहर ही ले लो. So let us talk about x v का differentiation. So x को v को constant लिया, x को differentiate कर लो, and then what you do, now you take x as constant, so here 2x, and then this is dv by dt. This is how we do differentiation of things which are in multiplication, two different variables, right? And this is your dv by dt. So from here you can write this is your 2b square and this is plus 2xa plus a, okay? And this is equal to 0. So 2x plus 1 into a is equal to 2v square, okay? So a is equal to how much? 2 v square. v square कितना होगा तुम्हारा? 1 by 2x plus 1 का square. So 2v square divided by, there will be negative sign here. So है ना, क्योंकि I mean इसको इस साइड लेकर गए हैं हम, so this there will be negative sign, and this into 1 by 2x plus 1.
So correct answer should be what? Minus 2 by 2x plus 1 का whole cube. Okay. So minus 2 by 2x plus 1 का whole cube. So option 2 will be the correct one. Okay. B. Now let us talk about this. The ratio of distance traveled by a freely falling body, first, second, third, and fourth second, 1:3:5. We don't need to worry about this one. हमने किया भी है ना? So this is this thing. Now let us talk about this one. A small block slides down on a smooth inclined plane starting from rest at time t equal to 0. Let Sn be the distance traveled by block in time interval t equal to n minus 1 to t equal to n. Then the ratio Sn by Sn plus 1. So, I mean, this interval कहने का मतलब nth second, right? So, S nth कितना होता है तुम्हारा u plus, and this is a by 2, and this is 2n minus 1, and it is starting from rest, so u is equal to 0 and it is on inclined plane. So inclined plane पे acceleration क्या होता है? Down the plane, that will be your g sin theta, but it will be same for both the intervals, right? So acceleration is going to be constant one. So let us use the formula. If nth आप क्या लिखोगे? That is your a by 2, and n का value, I mean n it is, so 2n minus 1. एंड देन एस एन प्लस वन एथ कहने का मतलब n सेकेंड से लेकर n प्लस वन एथ सेकेंड तक कितना चला है, समझ रहे हो? आई मीन अगर आप इसको 5 लेते हो तो दिस इज टॉकिंग अबाउट 6 सेकेंड, सो 5 से 6 के बीच में वो कितना चला है. सो एस एन प्लस वन एथ के लिए आप क्या करोगे? a बाई 2, एंड देन 2 n का वैल्यू क्या रखने वाले हो? n प्लस 1 माइनस 1. So this is going to be 2n plus 2. So a by 2, 2n plus 1. So what will be the ratio? That will be 2n minus 1 by 2n plus 1. So correct answer should be your which? Second one. देखो काफी easy questions है. Speed of swimmer in still water is this. The speed of river water is this, and it is flowing due east. So is river is flowing in the east direction. If he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, so shortest path कि along वो travel करना चाहता है, so what that person will do, it will swim or move by making certain angle with this vertical direction, then only its horizontal velocity will get cancelled by water velocity, and it will have only velocity in the vertical sense, and that is why it will be able to go along the shortest path, right? So this is this thing. Now v r ka value given hai, that is your 10 unit, and velocity of swimmer with respect to river is given, that is 20. And what else is given? Nothing, right? The angle at which it should swing. So this is v, let's say, and that is equal to how much? 20. So 20 sine theta, 20 sine theta should be clearly equal to how much? It should be equal to velocity of river, right? And that is क्योंकि v sine theta will be in this direction, done, and that should be equal to vr. So vr is how much? That is your 10. So sine theta is how much? That is your half. So theta is how much? That is your 30 degree. So 30 degree in which direction? West or what? 30 degree, I mean with the west only, not with the east. So correct answer should be 1. Okay. चलो आगे बढ़ते. Preeti reached the metro station and found that the escalator was not working. Okay. चलो उसको पता चला escalator work नहीं कर रहा है. She walked up the stationary escalator in time t1. So ये तुम्हारा एस्केलेटर है, एंड वो चल के खुद से इसको जब कवर करती है तो कितने टाइम में कवर करती है? t1. लेट्स से डिस्टेंस इज समथिंग l. ओके, आई मीन ओवरऑल डिस्टेंस की मैं बात कर रही हूँ. सो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ प्रीति, उसकी पर्सनल वेलोसिटी, सो वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाउ मच? That is going to be l by t1. Okay. On the other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time t2. अब देखो वो यहाँ पे खड़ी रहती है, and then escalator उसको कितने टाइम में ऊपर की तरफ ले जाता है? t2 टाइम में. So velocity of escalator with respect to ground, क्योंकि because of escalator velocity only this Kriti is going to reach to the top, right? So Kriti is able to cover distance l. So this is l by t2. Done it. The time taken by her to walk up on the moving escalator. So moving escalator पे वो walk कर रही है, यानी कि वो अपने velocity को भी utilize कर रही है. So overall वो दोनों की velocity की वजह से that person will be able to climb up to the escalator. So quite logical question. So now that Preeti is having both velocity, I mean this is your L by T1 also and L by T2 also.
So दो velocity से it is covering L distance. So time taken will be this one. Okay. And this time is equal to how much? That is your T1 T2 divided by T1 plus T2. सो बेसिकली प्रीति का पर्सनल कैपेसिटी में वेलोसिटी ये है, एस्केलेटर का पर्सनल कैपेसिटी में वेलोसिटी ये है. जब ये चल के भी जा रही है और एस्केलेटर भी इसको ऊपर ले जा रहा है तो दोनों का वेलोसिटी इज एट वर्क. सो ओवरऑल इन दिस टाइम प्रीति विल बी एबल टू रीच टू द टॉप. Okay, so correct answer is B. Yeah, that is correct. Okay, now let us deal with this one. A particle of unit mass undergoes one dimensional motion such that its velocity varies according to this. So Vx is equal to how much? Beta x to the power minus 2. देखो ये सारे क्वेश्चन में only thing is mathematics, nothing else. The acceleration of the particle as a function of x is given as what? So acceleration क्या होगा? अब देखो acceleration को आप क्या लिखते हो? dv by dt, and also acceleration is equal to v dv by dx. दिस इज ऑल्सो देयर. सो ए एज अ टाइम अगर देखना है तो ये इक्वेशन यूज करो, ए एज एक्स अगर देखना है ये इक्वेशन यूज करो. ये कहाँ से आया इक्वेशन? यहीं से आ रहा है. देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, डीवी बाई डी एक्स कर लो इंटू डी एक्स बाई डी टी कर लो. सो दिस डी एक्स बाई डी टी विल बिकम वी, सो दिस विल बिकम वी डीवी बाई डी एक्स. सो सिंपली इस इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया, देन वी आर गेटिंग दिस वन. ओके, सो दिस थिंग इज व्हाट वी नीड टू यूज. तो सबसे पहले आप dv बाई dx निकाल लो, उसके बाद उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, सो dv बाई dx क्या होगा? अब आपको भी पता है डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स टू द पावर n is equal to how much? nx n plus 1, है ना? I'm just writing in case somebody is not able to recall. ओके, सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? देखो n का वैल्यू क्या है? -2n है यहाँ पे, एंड देन बीटा इज ऑलरेडी देयर. सो x का पावर कितना होगा? n, सॉरी n -1 होता है, nx n -1, सॉरी. सो दिस इज -2n -1. दिस इज दिस थिंग. एक्सेलरेशन क्या होगा तुम्हारा? v dv by dx. सो v इज इक्वल टू हाउ मच? बीटा x to the power -2n into, and this is -2n beta and x to the power -2n -1. So there are two x's in multiplication and they have powers. So जब दो चीजें multiplication में होती है तो उनके powers add हो जाते हैं. ठीक है, so this will become -2n beta का square into x का power क्या होगा? add कर लो और जो भी powers है. So -2n -1, that is -4n -1. So -2n beta square x -4n -1, D will be your correct answer. ठीक है, चलो. The displacement x of a particle of mass n moving in one direction under the action of a force is related to time like this. The displacement of particle when its velocity is 0 will be. So तुम्हें क्या निकालना है? Displacement of the particle when its velocity is 0. So सबसे पहले आप इसके velocity को 0 करोगे, लेकिन उससे भी पहले आपको velocity निकालना पड़ेगा. So x as a function of time आप निकाल लो. रूट अंडर x क्या है? That is equal to t minus 3. So x क्या होगा? स्क्वायर कर लो t minus 3 का स्क्वायर. ओके, क्योंकि ऐसे डिफरेंशिएट करना ज्यादा आसान होगा. नाउ dx by dt will be equal to how much? 2. ओके, एक स्टेप और लिख लेती हूँ, t minus 3 का स्क्वायर dt. So this will become, n का वैल्यू 2 है, so this will become 2 and then t minus 3. So this is velocity, right? And when velocity will be 0, आप इसको 0 से equate कर लो. So t equal to 3 second. So 3 second में what is happening? Velocity is becoming 0. And displacement of particle when its velocity is 0 will be how much? So t का वैल्यू कितना आया तुम्हारा? So that will be 0, right? So that is going to be 0 because x equal to t minus 3 का स्क्वायर है. 3 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 है. यहाँ आप जब 3 सेकेंड रखोगे, सॉरी टाइम की जगह जब 3 सेकेंड रखोगे, यहाँ पे 3 minus 3 will become 0, so x will become 0. Option B will be correct one, right? So very simple. Now let us talk about this one. A particle moves a distance x in time t according to this equation. The acceleration of the particle is proportional to. ठीक है, एक्सेलरेशन आपको निकालना है. सो x इज इक्वल टू हाउ मच? t प्लस 5 टू द पावर -1. वेलोसिटी निकाल लो आप. So this is equal to -1 t plus 5 -2. ओके, dx by dt. आई होप डिफरेंशिएशन आपको सिंपल पता है. अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो.
आई कैन टेक सम 10 और 15 मिनट्स का सेशन जिसमें मैं आपको चीजें एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसा मत सोचना कि एग्जाम के टाइम पे इन चीजों को हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। आई मीन there is no particular fixed time when you need to sort out things. Whenever you realize that is the right time to sort the things out, okay? So if you're realizing that thing ki thoda trouble ho raha hai, you can let me know, okay? I will be very soon uploading that. Okay, so this is dx by dt, that is your velocity. Now we need to calculate acceleration. Acceleration के लिए आप क्या करोगे? dv by dt. So again this is d by dt of velocity which is -1, so minus sign को मैं बाहर ले रही हूँ, and this is t plus 5 minus 2. So this will become how much? This will become -2 will come out, so plus 2, and then this is t plus 5 ka power -3. Okay, so this is your acceleration. Now options are in terms of velocity and distance. So let us mark it. सबसे पहले a का वैल्यू, जैसे देखो x तुम्हारा क्या है? t plus 5 to the power -1 is x. So t plus 5 to the -1, जैसे इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 t to the t plus 5 to the power -1 to the power 3. Okay, so t plus 5 to the power -1 is what? X. So यहाँ से हम इसको कह सकते हैं 2x का पावर -3. बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, डिस्टेंस का पावर -3 का ऑप्शन नहीं है. देन सो वेलोसिटी से ही होगा, एंड वेलोसिटी के लिए भी दो ऑप्शन दिया है, सो वी नीड टू चेक. नाउ लेट अस डू दैट थिंग. a इज इक्वल टू 2t plus 5 minus 3. अब आप देख लो वेलोसिटी तुम्हारा कितना दिया है. Velocity is equal to -1 t plus 5 to the power -2. So let me do this thing. I mean 2. ओके, इस माइनस साइन को आप इधर की तरफ ले आओ, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ -v इज इक्वल टू t plus 5 to the power -2. ओके, सो यहाँ से t plus 5 मैंने लिखा, यहाँ -2 लिखा, and then we have to written -3 power. Done है. So what I'm going to do, I'm going to do here 3/2. Okay, so 2 will get cut and then you're left with -3. So ये statement same है, right? So 2 t plus 5 to the power -2 is equal to -v. So this is your -v to the power 3/2. Okay, so this will become equal to how much? I mean a is directly proportional to -1 का power 3/2 अगर आप करते हो, then that you will be getting as minus out. Okay, so this is -2 and v 3/2. So a is directly proportional to velocity ka power 3/2. Okay? So just mathematics, option A should be correct. Okay. Now this question, a ball is dropped from a high-rise platform at equal to 0 starting from rest. After 6 seconds, another ball is thrown downward from the same platform with a speed v. The two balls meet at t equal to 18 seconds. What is the value of v? Okay, so one ball is dropped. Dropped कहने का मतलब initial speed is 0 and this is getting dropped at a time t equal to 0. So it will follow this trajectory. After 6 seconds, another ball is thrown downward. So t equal to 6 seconds pe, again you are dropping another ball. It will also follow the same trajectory and with a platform with a speed v, and it is thrown down with a speed v, not with rest. Okay, it is getting released. The two balls meet at time t equal to 18 seconds. So 18 second में meet कर रहे. It means first ball तो 18 second के लिए travel किया है, and second ball जो कि 6 second के बाद फेंका गया है, it must have stayed in air for 12 seconds for time t equal to 18 seconds, right? What is the value of v? So जितना डिस्टेंस ये 18 सेकंड में कवर करेगा उतने ही डिस्टेंस इसको 12 सेकंड में कवर करना है, देन ओनली दे विल बी मीटिंग, राइट? मीटिंग करने कहने का मतलब क्या है कि सपोज इस पॉइंट पे मीट किया, यानी कि फर्स्ट बॉल यहां से चल के जितना डिस्टेंस कवर किया सेकंड भी उतना ही कवर किया होगा, देन ओनली दे आर मीटिंग, राइट? सो कैलकुलेट दैट थिंग. इसके लिए डिस्टेंस को आप क्या लिखोगे? s इज इक्वल टू u इज 0, राइट? सो दिस इज योर हाफ g 18 का स्क्वायर, एंड इसके लिए आप क्या लिखोगे? दिस इज योर v इंटू 12, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रही हूँ, सो प्लस हाफ g इंटू जी 12 का स्क्वायर. देन इन दोनों को आप इक्वेट कर लो. सो एक काम कर लो, हाफ जी 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, सो 18 माइनस 12 दैट इज योर 6, एंड 18 प्लस 12, so that will become 30, and this is equal to how much? v into 12.
So this will become how much? This is 2 and this is your 15 and this is your 5. So V is equal to how much? 75 meter per second. Okay. So correct answer should be which one? It should be A. Now let us talk about this one. A car moves from X to Y with a uniform speed VU and returns from Y to X with a uniform speed VD. So X to Y वो गया है with what speed? VU. Okay, and returns from Y to X with a speed BD. The average speed for this round trip. So average speed तुम्हारा क्या होता है? Average speed we are talking about. So that will be your distance by time. Okay, so overall total distance covered will be equal to how much? Let's say this distance is D. So total distance covered is 2D. What is the time taken? So first D is getting covered with VU speed. So time will be D by VU. And second D is getting covered with VD speed. So that will be equal to D by VD. Okay. So this is equal to 2D by D. And this is VD plus VU into VD into VU. So dd will get cancelled and option will be 2 vd vu divided by vd plus vu. Okay. So this is going to be your correct answer. So answer should be equal to B. Let us check first. Yeah. देखो एक चीज और तुम याद रखना when acceleration is constant. Okay. So when you talk about constant acceleration, in that case, when you are asked average velocity, okay, and in that case you can write average velocity always as equal to v plus u by 2, where v is the what v is the final velocity, u is the initial velocity in that time interval divided by 2. So किसी भी time interval में if you are getting asked average velocity for constant acceleration, you can write it as v plus u by 2. Then, so this will be the thing. Then average speed change हो सकता है क्योंकि I mean displacement में only you talk about initial and final points के बीच का distance. Done it? And in average speed you will be talking about total distance. So that may be different. But if A is constant, average velocity you can write as v plus u by 2. Okay. और ये कहाँ से आ रहा है? जैसे देखो S is equal to आप क्या लिखते हो? ut plus half at square. This is what you write. So this is change in displacement. And this is happening in t time interval. Okay. So let us calculate average velocity. That will be equal to change in displacement. So ut plus half at square and divided by what? Divided by क्या होता है? Average velocity displacement by time. So this is this. And this will become 2u plus at divided by 2. Now u plus इसको क्या लिख सकते हो? U plus at by 2 and u plus at is v, right? So v plus u by 2. This is average velocity. Okay. चलो अगर स्पीड भी सेम हो सकता है अगर तुम्हारा और होगा इनफैक्ट इफ मोशन इज हैपनिंग अलोंग सिंगल डायरेक्शन. लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है कुछ भी हो रहा है देन यू कैन नॉट यूज फॉर एवरेज स्पीड दैट एक्सप्रेशन. ओके, नाउ लेट अस लुक एट दिस वन. अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन दिस. Okay, so f as a function of time t is given. F is the acceleration, t is time. Okay, f naught and t are constant. The particle at t equal to 0 has 0 velocity. In the time interval between t equal to 0 and the instant when f equal to 0, the particle's velocity is. So what will be the velocity of particle at the instant when its acceleration is becoming 0? So simple है यार, f equal to 0 करना है पहले. So first you need to calculate the time at which you are getting asked the particle's velocity. So f को 0 करो, that is f naught 1 minus t by t is equal to 0. So 1 minus t by t equal to 0, that is t equal to capital T. Okay. Now let us calculate velocity. So friction, sorry, not friction, this is acceleration. So f को आप क्या लिख सकते हो? dv by dt, and that is equal to how much? f naught 1 minus t by t. Now what will be dv? This is equal to f naught 1 minus t by t into dt. You have to calculate velocity, integrate it, and velocity at what time? T time. So limit आप कहाँ से लोगे? T equal to 0, and at t equal to 0 velocity is equal to 0, and then at time t you have to calculate velocity. Let's say it is v. So dv का integration क्या होगा? V, and if you will put the limit v minus 0, that is v, and this is equal to f naught. I mean इसको अगर आप integrate करते हो, so this is dt minus t by t dt. डन है. सो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? टाइम t होगा माइनस दिस इज कांस्टेंट
सो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लो, टी डी टी क्या होगा, सो एक्स एन डी एक्स क्या होता है तुम्हारा, दैट इज एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन. सो दिस विल बिकम इक्वल टू, आई मीन दिस इज टी का पावर वन, सो एन इज वन, राइट, सो वन प्लस वन टू, सो दिस इज टी स्क्वायर बाई टू. It is this one, okay? And then you need to put the limit. Limit कहाँ से कहाँ तक रखोगे, 0 से t. So this will become t minus t by 2. So this will be what, t by 2. So this is t by 2. Sorted. So velocity should be f naught t by 2. That is option C should be correct one. Okay. Yeah. Now let us move to this one. The position x of a particle with respect to time t is given. X is given as a function of time t. What will be the position of this particle when it achieves maximum speed along the plus x direction? So what will be the position? X का value क्या होगा when the particle is having maximum velocity? So maximum velocity आप कैसे निकालोगे? पहले आप velocity निकाल लो. So that will be dx by dt, and that is equal to 9 dt square by dt minus dtq by dt. So this is going to give you how much? 18t minus 3t square. Now you need to maximize this velocity. So ये velocity कितने टाइम पे maximum होगा? Maximum of the function आप कैसे निकालते हो? जैसे आपको कोई भी function दिया है, यहाँ पे velocity दिया है, किस variable के term में दिया है? Time. So if you know function and you know what is the variable in that function, then in order to calculate maxima or minima, differentiate that function with respect to the variable, equate it to 0. You will be getting certain values. And then calculate the second differentiation of that function with respect to the variable. So आपने एक बार डिफरेंशिएट किया, उसको फिर से डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, एंड देन लेट्स से हियर यू गॉट टाइम वैल्यू 0 करने के बाद यू गॉट t1 एंड t2. सो हियर यू विल बी पुटिंग t1, ये यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसमें आप t1 पुट करो एंड ट्राई चेकिंग इफ दिस इज ग्रेटर देन 0. अगर ग्रेटर देन 0 है देन उस टाइम पे तुम्हारा फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा. एंड इफ दिस इज लेस देन 0 देन उस टाइम पे फंक्शन क्या होगा, या उस वेरिएबल के वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा तुम्हारा, मैक्सिमा, एंड हियर इट विल बी मिनिमम. बट सेकेंड चेक में हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फर्स्ट केस में इफ यू आर गेटिंग ओनली सिंगल वैल्यू देन यू डोंट नीड टू गो फॉर द सेकेंड चेक. जो भी वैल्यू आया है वो सिंपली क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वही होगा. आई मीन अगर मैक्सिमा पूछा है तो उस पर मैक्सिमा ही होगा, क्योंकि सिंगल वैल्यू आ रहा है ना. एंड इफ इट इज गेटिंग आस्क्ड इट मींस कि उस वेरिएबल के वैल्यू पे दैट फंक्शन विल बी whatever is getting asked in the question, right? So that is what you need to keep in mind. चलो अब यहाँ पे मैं dv by dt करने वाली हूँ. So क्योंकि मुझे मैक्सिमा निकालना है, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर रही हूँ. 18 माइनस this will become how much, 60. इसको आप 0 से इक्वेट करो, then you are getting time का सिंगल वैल्यू 3 सेकेंड. So we don't need to check with the second one. Okay? ऐसे भी आप सेकेंड वन चेक करके देख लो, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, है ना, क्योंकि अपने फंक्शन को सिंगल टाइम डिफरेंशिएट किया, डबल टाइम करोगे यू विल बी गेटिंग -6 एंड -6 इज लेस देन 0 ऑलरेडी, राइट. सो जो भी तुम्हें टाइम मिला है फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 करके एट दैट फंक्शन विल बी मैक्सिमम. सो t इक्वल टू 3 सेकेंड पे तुम्हारी वेलोसिटी मैक्सिमम है. Then at t equal to 3 second, calculate the x. So that will be equal to 9 into 3 ka square, that is 9 minus this is 27. So this will be equal to how much? 54, right? So this has to be 54 meter. I hope that is 54. Yeah. Option A. Chalo. The displacement x of a particle varies with time t as this. Okay, where a, b, alpha and beta are positive constants, the velocity of particle will be, okay, so will it be independent of b, drops to 0 when alpha is equal to beta, go on decreasing with time, go on increasing with time. So सबसे पहले आप velocity को निकालो. So this is dx by dt. अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x क्या होता है with respect to x, that is ex. अगर मैं यहाँ पे x के साथ कुछ भी कांस्टेंट डाल दूं then इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट कांस्टेंट विल फील लाइक इट विल अपीयर आउटसाइड. ओके, सो 2e to the power 2x. अगर तुम इंटीग्रेशन करते हो 2x प्लस 1 का dx, तो अगेन प्लस 1 वोंट कीप एनी इफेक्ट. मल्टीप्लीकेशन वेरिएबल के साथ क्या मल्टीप्लाई किया है, ओनली दैट इज गोइंग टू अफेक्ट. सो 2e to the power 2x plus 1. सो ऐसा कुछ होगा. अब यहाँ पे इसी चीज को हम यूज करते हैं. सो d
ए इज ए कांस्टेंट, उसको मैं बाहर लेती हूँ इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन साइन से, e टू द पावर माइनस अल्फा टी डिवाइडेड बाई डी टी एंड प्लस बी डी ई टू द पावर बीटा टी बाई डी टी। आप लिखो, यहाँ पे सारा गेम मैथमेटिक्स का है, आप चेक करो इसको। So this will become minus alpha is the constant here getting multiplied with time. So minus alpha a here, minus alpha बाहर आता हुआ दिखेगा. So e to the power minus alpha t and this will become beta is the constant here multiplied with the variable. So beta b and e to the power beta t. This is what you are getting. अब आपको बताना है इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा है नहीं है, ये तो गलत है। ड्रॉप्स टू जीरो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा बीटा को इक्वल कर दो, ये जीरो नहीं हो रहा। देन है सो e टू द पावर x का वैल्यू जीरो कब होता है, व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी, सॉरी माइनस एक्स, अगर e टू द पावर माइनस एक्स है देन ये टेन टू जीरो कब करेगा, जब तुम्हारा ये वैल्यू क्या है तुम्हारा, व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी, एंड e टू द पावर x तुम्हारा टेंड्स टू जीरो कब होगा, व्हेन x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। ओके, सो यहाँ पे अल्फा और बीटा को अगर आप सेम करते हो तो सेम करने से दिस इज नॉट गोइंग टू बिकम व्हाट, दे आर नॉट गोइंग टू बिकम इक्वल, ऐसे भी आप देख लो अल्फा और बीटा इक्वल है लेकिन ए और बी तो डिफरेंट हो गया ना, सो दे आर नॉट गोइंग टू बी इक्वल। नाउ गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, ये आप कैसे बताओगे, अगर आपको ग्राफ सही से पता है ना यू कैन इजिली सॉल्व इट। जैसे देखो मैं तुम्हें थोड़ा रिवाइज करवाती हूँ, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x का ग्राफ आप कैसे बनाते हो, आप बनाते हो ऐसे, ठीक है। सो ये है तुम्हारा x एक्सिस, ये है y एक्सिस। अगर तुम्हें y इज इक्वल टू, मैं x को नेगेटिव कर रही हूँ, ठीक है। सो जब मैं x को नेगेटिव करूंगी ना, अगर मुझे x के पॉजिटिव के लिए ग्राफ पता है तो नेगेटिव के लिए बता सकते हैं कैसे, बाय टेकिंग मिरर इमेज इन द y एक्सिस। सो इसका जो ग्राफ होगा जो आपने e टू द पावर x के लिए बनाया है उसका इसमें मिरर इमेज देख लो, सो इट विल बी दिस वन। ओके, सो दिस इज e टू द पावर माइनस x, दिस इज e टू द पावर x। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये है x इक्वल टू जीरो का पॉइंट, x जीरो जब पुट करोगे एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन, सो हियर ऑल्सो एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन। ओके, सो दिस विल बिकम वन, सो दिस पॉइंट इज वन। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो हम जो ग्राफ बनाने वाले हैं उसमें ओनली वी कैन टेक पॉजिटिव्स। सो e टू द पावर प्लस के लिए पॉजिटिव वैल्यू ऐसा दिखेगा एंड e टू द पावर नेगेटिव के लिए आई मीन e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x के लिए ड्रॉ करूं तो वो तुम्हारा कैसा जाएगा, ऐसा, ठीक है। नाउ लेट अस ड्रॉ आवर थिंग्स, जैसे यहाँ पे एक काम करो, इस टर्म को मैं अकेले ड्रॉ करती हूँ। सो इस टर्म को अगर मैं अकेले ड्रॉ करूँ देन एक काम कर लो आप, ठीक है, बीटा बी ई टू द पावर बीटा टी माइनस अल्फा ए ई टू द पावर माइनस अल्फा टी। तो मैं तुम्हें क्या दिखाने वाली हूँ, मैं ये कहूंगी चलो इसका ग्राफ हम अलग से बना लेते हैं, इसका बनाते हैं, फिर एक ही ग्राफ में दोनों को पेस्ट करेंगे। सो अगर मैं इसका बनाऊं, सो दिस इज ई टू द पावर प्लस का ग्राफ है, सो ये ऐसे जाएगा, डन है। और ये वैल्यू तुम्हारा कितना होगा, सो यहाँ टी का जीरो कर लो, सो ई टू द पावर जीरो वन हो जाएगा बीटा बी, सो दिस इज बीटा बी, डन है। एंड इसके लिए आप ग्राफ बनाओ, माइनस है सो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, इधर तुम जा नहीं सकते क्योंकि टाइम नेगेटिव होगा, टाइम नेगेटिव वी कैन नॉट टेक, राइट। एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच, अल्फा ए, राइट। सो दिस इज अल्फा ए। नाउ आप कुछ भी ले लो, अल्फा ए ग्रेटर देन बीटा बी या बीटा बी ग्रेटर देन अल्फा ए, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ यू टेक। सो इन दोनों को मैं एक साथ बनाने वाली हूँ, सपोज कर लो बीटा बी बड़ा है, सो ये कुछ ऐसे हुआ एंड देन दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी यहाँ से ऐसे। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, इनिशियली डिफरेंस इतना होगा, है ना, इनिशियली कहने का मतलब टी इक्वल टू जीरो पे, सो टी इक्वल टू जीरो पे ये वैल्यू है बीटा बी, ये है अल्फा ए, सो डिफरेंस विल बी बीटा बी माइनस अल्फा ए, सो दैट इज दिस वन, राइट। एंड जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जाएगा विथ इंक्रीजिंग टाइम यू कैन क्लियरली से दैट ये वैल्यू बढ़ रहा है और ये वैल्यू घट रहा है, डन है। अगर ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है तो तुम्हारा क्या होगा, डिफरेंस भी इसका देखो, डिफरेंस क्या होता जा रहा है, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, समझ रहे हो। सो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो टाइम के साथ बढ़ता जाएगा, समझ रहे हो। सो गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम,
सो वेलोसिटी क्या है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो है, एंड दिस डिफरेंस इज इंक्रीजिंग विद टाइम. इफ इट इज इंक्रीजिंग यू विल बी सेइंग ओके ये ऐसा होगा. आप कहोगे मैम आप एक काम करो, बीटा बी को छोटा ले लो. चलो मैं वो भी कर देती हूँ तुम्हारे लिए. जैसे आप देख लो, अल्फा ए को हमने बढ़ा लिया तो ये यहाँ से मैंने बनाया, एंड बीटा बी यहाँ से बनाया मैंने, ठीक है ऐसे. लेकिन आप देखो ना, इनिशियल सेपरेशन ये है, अब टाइम के साथ ये वाला वैल्यू तो बढ़ रहा है ना और ये घट रहा है. जब ये बढ़ेगा और ये घटेगा तो ये डिफरेंस तुम्हारा क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है. डन. ये जैसे मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे देख लो, इनिशियली ये वैल्यू, ये वाला वैल्यू इतना है, एंड दिस वैल्यू इज दिस, सो इन दोनों का डिफरेंस ये है. अब फाइनली क्या हुआ, ये घट गया, ये तुम्हारा क्या हुआ, घट गया. सो दिस इज विच वन, किसको हमने बढ़ा लिया है, एक सेकेंड. दिस इज नेगेटिव माइनस अल्फा ए वाला, नेगेटिव वाला टर्म है, ठीक है, एंड दिस इज पॉजिटिव वाला टर्म. अब क्या हुआ देखो, ये नेगेटिव वाला टर्म घट गया, डन है, एंड ये पॉजिटिव वाला टर्म बढ़ गया. जब पॉजिटिव टर्म बढ़ेगा और ये वाला टर्म घटेगा तो ओवरऑल डिफरेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. यहाँ भी वो बढ़ रहा है विद द टाइम. समझ रहे हो. सो आई होप यू आर गेटिंग मी. जैसे यहाँ पे ये दिखाना मुझे ज्यादा क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा है कि ये जब ये डिस्टेंस तो इतना हो गया, आप ऐसे नहीं देखो ना. जैसे यहाँ पे ये वैल्यू इससे ये बढ़ गया, समझ रहे हो, और ये इससे घट गया. डन है. तो जिसको आप घटा रहे थे वो घट गया, और जिससे आप घटा रहे थे वो बढ़ गया. दोनों ही फेवरेबल है फॉर इंक्रीमेंट ऑफ द वेलोसिटी. इस वेलोसिटी को आप कैसे बढ़ा सकते हो, बाई डिक्रीजिंग दिस और बाई इंक्रीजिंग दिस. और बढ़ते टाइम के साथ ये दोनों ही हो रहा है. इट मीन्स वेलोसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज विद टाइम, राइट. एज टी विल इंक्रीज, वेलोसिटी विल इंक्रीज, राइट. दिस इज व्हाट विल हैपन. I hope I'm able to make you understand. Okay, now let us go with this one. A man throws balls with the same speed vertically upward, one after the other at an interval of 2 seconds. ऐसे questions भी बहुत आते हैं, अब तक हमने बहुत कर लिए. What should be the speed of throw so that more than two balls are in the sky at any time? T equal to 0 पे आपने पहला फेंका, T equal to 2 second पे you are throwing the second one, and T equal to 4 second पे you will be throwing the third one, right? And it is said that what should be the speed of throw so that more than two balls are in the sky at any time. More than two means at least three, right? कहने का मतलब कि when third is getting thrown, this one should be in air and also this one should be in air. Then only you will say three is in air, right? At just at the time you're throwing third one, that is at t equal to 4 second, these two should be in air. कहने का मतलब ये है कि 4 सेकेंड शुड नॉट बी द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस थिंग गेटिंग थ्रोन. क्योंकि अगर 4 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट होता है तो पहला बॉल तो ग्राउंड की तरफ आ जाएगा, इट वोंट बी इन एयर. डन है. इफ यू वांट 3 balls to be in air, I mean its time of flight should be greater than 4 seconds, just greater than 4 seconds, right? This is what you need to use here. और अगर time of flight greater than 4 second है, पहले 4 second रख के velocity निकाल लो. V is equal to u plus at. डन है. Finally at highest point velocity will be 0. Initial speed u ले लो आप, minus 10 into time of flight is 4 second, means up जाने में 2 second, down जाने में 2 second. यहाँ पे 2 है, यानी कि u is equal to 20 meter per second. अगर आप 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करते हो देन इट विल बी कमिंग बैक इन 4 सेकेंड, बट यू हैव टू लेट इट बी इन एयर फॉर द टाइम equal to 4 seconds, right? TF should be greater than 4 seconds for that purpose, and then U should be greater than 20 meter per second. Done it? U should be greater than this, that is greater than 19.6. क्योंकि अगर आप G का वैल्यू 9.8 लेते हो, this will be 19.6. More than 19.6 should be the answer. Only with this speed, no. Any speed less than 19.6, no. Less than तो कोई scope ही नहीं है. At least this, no. More than this, ठीक है. I hope you are able to make sense of thing, and this way we have ended this session. देखो हमारे पास इसमें हाइलाइट्स क्या क्या है. इन काइनेमेटिक्स व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू कैन गेट आस्क्ड. मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है. दिस इज वन थिंग. Okay, motion under gravity, and then next thing is your what, relative velocity.
डन है. सो दिस इज योर रिलेटिव वेलोसिटी थिंग. एंड देन रिलेटिव वेलोसिटी में क्या क्या आप देख सकते हो. आई मीन दिस इज योर रेन प्रॉब्लम्स, एंड देन दिस इज योर रिवर बोट प्रॉब्लम, एंड देन प्लेन फ्लाइंग इन द एयर. डन है. और एनीथिंग एल्स. मैं टाइप्स पे ज्यादा नहीं जाती. आई एम लाइक यू शुड नो द कॉन्सेप्ट सो दैट यू कैन क्रैक द क्वेश्चन. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. सो एंड रिलेटिव वेलोसिटी में क्वेश्चंस को करने के लिए यू शुड बी कंफर्टेबल विद वेक्टर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद हमने क्या देखा. उसके बाद आई मीन इफ डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t is given, then how you can calculate velocity. So velocity is your dx by dt. And if uh, velocity is given as a function of x, done है, velocity is equal to function of x, then how you can calculate acceleration v dv by dx. Okay. Graph portion I have not dealt with because for that I have kept a separate session, so that I will be posting very soon. Okay. That also I will be doing. So yeah, इसमें और कुछ तो था नहीं. डन है. सो मैथमेटिक्स पे आप थोड़ा ध्यान दो. ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, लॉगरिथमिक ग्राफ, ये सब चीजों से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ. ठीक है. I hope things are clear, but in case you're having any doubt or you have anything to suggest, anything to say, anything to share, you can always let me know in the comment section. Okay. Thank you. Take care of yourself. Bye bye.